So before starting with the cloud, uh, you should know some basic concept first. That will be regarding Linux and networking and operating system. Now let's go through what's the definition of cloud computing is there. So cloud computing, here you're actually working with the data centers, which are groups of networking and storage devices together in terms of racks. So multiple racks form together and create an data centers. And there are a group of data centers are there, which are directly called as a geographical location. Okay, so we are having data center at nearest location over here, that is from Mumbai, because they are connected with sea lines. Now, what is cloud computing? You are actually renting for data centers, whatever resources you will use from a data center in terms of compute, networking, security, databases, and storage. Now, relate this with a physical computer. Now, what is compute? Compute means you are calculating something, right? So you are using RAM configuration. You are using machines over there. That's regarding computer. It's not like you are buying an physical computer. So costing for any physical computer, that will be around minimum 30 to 40,000 beyond the limit. Okay. And suppose you are using cloud services, you are renting for a physical machine, you are renting for a virtual machine here. Okay, that will be a logical unit. So you can rent for VM, which will actually cost for only 6,000 or 5,000 per year. So rather than buying a physical computer, better way you can have a virtual machine from a data center as a rent basis. And that's what Azure will be provide you. Here, you are having Wi-Fi, right? For physical computer, you are having Wi-Fi, LAN, WAN, etc., etc. Likewise, here you can have a VNet, that is virtual network. Later on, we will see these services. In terms of security, suppose you are having a computer, here you are configuring for the firewall. So this type of services are also there within the security tab. You must have known about MySQL, which is a basic database, everybody practicing on it. This type of databases are also there from the data centers. You can scale them as per the demand. You can change the configurations. Okay, and as per the storage level, suppose here you are having SSD, so here you can attach volumes with the virtual machines. So this type of configurations are there. Main focus will be there. You will work on compute section, means calculations, RAM configurations, hardware configurations, virtual machines. Okay, compute, networking, security, databases, and storage. So this is the whole IT and cloud, which is providing you all resources. So total 100 plus services, 200 plus services are there. In terms of AWS, 200 plus services are there. In terms of Azure, 100 plus services are there. Now, what is cloud computing? Let's go to the definition of cloud computing. It's a pay-as-you-go service. Means whatever resources you will use, you will be billed for it. Like an electricity bill, right? You are consuming electricity bill for 1 month and then you are getting bill for it. Same for the cloud. If you are using some resources, if you are using some hardwares, configurations from the data center, at the end of the month, you will get bill. So here, while signing up for the Azure account, you should have a debit card or credit card, whatever it may be. And whatever bill will be generated after 1 month, you need to pay it. That's the case. So what is cloud computing? It's on. Atul, your screen was. Okay, I will just share it. It's an on-demand delivery of IT resources. I'm repeating. What is cloud computing? It's on-demand delivery of IT resources. On-demand delivery of IT resources with pay-as-you-go
pricing. And services which are include, that is compute, networking, security, databases, AI, ML, data science, etc., etc. So number of fields are there which are you can work on. Gamification is also there. So a lot more fields are there, out of which services which will be mainly configured within compute, networking, security, and databases. So the whole definition will be on-demand delivery of IT resources with pay-as-you-go pricing, where services like compute, networking, security, databases are being used. That's it. Okay. Now, main part over here. What are the types of cloud there in market? So you are using Azure, you are using AWS, you are using GCP, which is Google Cloud Platform, Azure, that is Microsoft Azure, Amazon Web Services. So these AWS, which is from Amazon, Azure, which is from Microsoft, and GCP, which is from Google. These are public clouds. Everybody can use it, and you can have workloads at your environment. Suppose some companies are there, we don't want to share their resources outside the network or internet. So they will have private cloud in that case. Okay. Only resources will be bounded to their organization only, which will provide them more security and more control. And combination of public cloud and private cloud, which will be hybrid cloud. So it may ask in an interview, what types of cloud are there in an industry? So you can tell them that we are having a public cloud, private cloud, and hybrid cloud. Hybrid cloud, which is combination of public and private cloud. Now let's take example of hybrid cloud. Suppose you are having any banking application. That application hosted on a public cloud, but the data, financial data, that will be stored on a private cloud. So in this way, we can have a hybrid cloud example where application will be on a public cloud and data of it will be stored on a private cloud. We know public cloud is secure, but as some norms and as a what we can say for data privacy purpose, public clouds are being preferred. Along with the hybrid cloud in market, multi-cloud is also there. Now, what is multi-cloud? Whether your company is working on AWS also and Azure also. Suppose databases are cheap in cost from Azure and virtual machines are cheap in cost from the AWS. So you can use AWS and Azure both in your projects. That will be multi-cloud. So in market, multi-cloud and hybrid cloud, which are trending one. And if you're having more than 2 skill set as per the cloud level, so chances of selections are more, and you can also do certifications regarding the same as well. So these are the types of cloud depending on architecture, depending on the deployment. Okay. So which are the types of clouds are there? Public cloud, private cloud, hybrid cloud, multi-cloud, and one more is there, community cloud. Now what is community cloud? If any group of people are deciding further, creating their own cloud, and creating one culture for it, that will be community cloud. Now let's take example of types of cloud depending on services they are providing. That will be infrastructure as a service. Okay, here you will mostly deal with the hardware, that is infrastructure. Platform as a service, that is PaaS. So suppose you are working with the databases, that is under platform as a service, because you are directly using it, right? You are not going through the selecting operating system, selecting the installation, etc., etc. And one more example, that is of SaaS, that is software as a service. So you must have used Netflix, right? Amazon Prime. So these are the software as a service. You are directly using it. So these are the 3 types depending on the services. IaaS, PaaS, SaaS. That's it. So it may ask in an interview what they understand by cloud computing, what are the types of cloud computing are there. So you need to teach like this.
It's an on-demand delivery of IT resources with pay-as-you-go pricing, where services are compute, networking, security, databases, AI, ML, etc., etc. Types of cloud, that will be hybrid cloud, public cloud, private cloud, community cloud, and multi-cloud. Types of cloud depending on the services, as PaaS, SaaS. That's it. Now let's come to Azure part. Now, this is a public cloud that we will learn. Now, those companies which are partnered with the Microsoft, they will use Microsoft Azure over there. Now, why we are using a cloud? Why there is need of having a cloud in the companies? Because ultimately, if you are creating your own data center, you need to maintaining it, because here 0 degrees Celsius temperature should be there. Staff should be there, which will maintain a data center. Then costing for staff is also there. Also, whatever workloads that you will have. Uh, Sorry, Atul, to Okay. disturb you. Your screen is repeatedly going down. You're not able. I like for my. I am not able to see. Okay. I share. Okay. So maintaining a data center is a big headache. Now let's take example of it. Suppose you are having a water purifier at the home. What is the costing for water purifier? Suppose you are having 10K to 15K in general, okay? And you are maintaining it. Sometimes you need to exchange filters. So that is also costing you 2K to 3K for every visit of a resource person. Sometimes you need to also exchange some parts, etc., etc. So on a yearly, you are having costing of around 6K for maintenance only, right? So costing for purifier is 10K, and yearly you are costing for 6K. You are maintaining it for 3 years. So ultimately you are having 18K in 3 years. So that is more than that purifier's cost. Same for the data center. If any company is maintaining a data center, here they need to maintain a 0 degree Celsius temperature, because computers works at minimum temperature very well. Staff you need to maintain, and other stuff is also there, because operational cost is also there. So you must have heard for OPEX and CAPEX. If you are buying something, that will be CAPEX, capital expenditure. Okay. And for data center, CAPEX means one-time investment to buying a data center. You need to go with the upfront cost. Now, what is the data center costing, which will be in a lakhs and crores? And if we are using Azure or AWS, you don't need to buy something. You will directly go with the renting it, right? So that's why companies are using these cloud platforms. And one more, it will also providing management. Your manager can see workloads. Your operational team can manage it. Your developer can add code into it, right? Lot more people can work together. That's the case, and that's why companies are preferring for cloud service providers and renting for them, right? So that's why we are learning for Microsoft Azure. Now let's go through some of research paper from a Gartner. Now, what is Gartner? Gartner is a business media. You must have known about Aztec, ZTV, etc., etc. That is entertainment media. But when I'm running any company, I will go through white papers only for taking a decision at my organization. So this is a paper which has been published by the Gartner, that is business media, in 2023. And here you can see now leaders in a cloud platform, that is Amazon Web Services. Then we are having a Microsoft Azure, then Google Cloud, then Oracle Cloud, IBM Cloud, Alibaba Cloud, Hawaii Cloud, Tencent Cloud. So you may get question like this: why Alibaba Cloud? Because some companies, some countries are not allowing other peoples to do business at their countries due to some rules regulation, right? They don't want to share their data, etc., etc. So that's why Alibaba Cloud, which is doing great business in China. As an Indian, we are allowing for every business to rule over here. And you can see
If you want to start with the cloud, you can try from AWS as well or Microsoft Azure, because these are the top cloud service providers right now. Number of opportunities are more, and as per the infrastructure level, if you are having a AWS skill set, you can easily learn Microsoft Azure, or if you are having a Microsoft Azure skill set, you can easily shift to the AWS. Concepts are same, only number of services, naming conventions, configurations are different. That's it. Okay. Here, suppose you are launching an EC2 instance in AWS. Here we are having Microsoft Azure VM that you can launch and connect. You can connect from SSH or RDP Connect, etc., etc. Here you are having an S3. Here you are having a storage account. Here you are having an VPC. Here you are having a VNet, etc., etc. Now, I'm just letting you know which are the requirements are there as per learning on Azure. Now here, you need to sign up for Azure account from portal.azure.com. You can simply enter in a browser, go through it, portal.azure.com. And you can sign up for this Azure portal. Sometimes we call it as console as well. You need to have a debit card. You can have a debit card, one mobile number, and email ID. That's it. These three credentials are required. And at the first time, you can directly sign up. Suppose pre-existing accounts are there, that will be deactivated if you're not paying for the same. That's the case. So make sure that you're signing up for portal.azure.com. Right now, I'm just signing into myazure.com, my Azure portal. So here I have entered portal.azure.com. I'm already having an Azure account. That's why I will be signing to this Azure portal. And here you can click on all services tab at the left hand side. You can see number of services are there. So here I'm clicking on all services. And at the left hand side, you can see compute section is there that we have discussed. Compute, databases, then storage, then networking, and security. These are the 5 main components: compute, storage, networking, security, databases. Okay. And as for the other domains, you can see AI, analytics is also there. These are the containers, which is part of DevOps now. DevOps is also separate over here. General, multi-cloud, and hybrid cloud technologies also added by them. So if you're working on a multi-cloud, hybrid cloud, this type of clouds as well, you can go with the Microsoft Azure in that case. So sometimes suppose you want to work with the AWS and Azure, both cases. So few services are there which are part of it. Now what you need to do, everyone, you need to have a debit card. Go with this link, portal.azure.com, and sign up for the same. Once your sign up will be completed, I think 2 rupees will be debited and credited again for the authentication level. And when your practice will be done for the month, you can have a bill for it. Like right now, I'm just showing you how bills look like. Here you can go through billing tab, and within billing, invoices will be generated. So this will be on a monthly basis. Here you can see this is my April bill, this is my May bill. Okay, and you need to pay it. So the services that you will use, that will be with pay-as-you-go pricing. Okay, suppose you are using it for 1 hour. For example, costing for, let's take an example. Suppose you have launched an Azure VM virtual machine. Okay, and costing for it, which will be 5K per year. And for example, you are using it for 1 hour. So 5Ks will be divided by 12. That will be your monthly cost. Divided by 30. That will be your daily cost. Again divided by 24. That will be your hourly cost. Again divided by 60. That will be your in minutes cost. Okay. So it will be around, I think, 2 rupees per hour, etc., etc. That's depending on your architecture as well. Suppose you are selecting for VM which only has 4 GB,
that will be around 5K. Suppose you are selecting for 8 GB of RAM configuration, so that will be 7K. Suppose you are selecting 16 GB, that will be 9K, etc. etc. Costing will be there, and it has no limit for the highest level. It will be up to infinity because these data centers are connected with each other, and as per your requirement, you can select for any configuration. So make sure that always select for configuration which is only required as per your project level. So first task for you all will be signing up for Azure account. Okay, you can go through portal.azure.com. I'm just pasting this link in a group. Now, one more thing. Before learning with the cloud, before starting with Microsoft Azure, you should know some Linux concepts, some operating system concepts, okay, and some networking concepts. Now, within Linux, you should have a basic commands practice. So for today's session, we will try for basic commands of Linux practice as well. In operating system, you should know types of OS which are present in the market. Like, for example, you must have heard of a Debian operating system. Depending on Debian, we are having Linux OS. You must have heard for Atul, Ubuntu your operating screen system. vanished again. Okay. You must have heard about the Ubuntu operating system, which is an open source Linux. So for freshers, I'm revising these concepts. What is Linux? So like you are using Windows operating system Linux that has been invented by Linus Torvalds. Previously, the operating system was Unix. Depending on Unix, and Linus Torvalds has invented Linux. It's an open source operating system. Means whatever packages you will use, you can modify it, you can install it, you can use everywhere free of cost. That's open source. And you can also contribute for the SEMs, right? That will be open source operating system. Number of packages are high over here. You need not to buy anything. That's the case. And when you are working with the servers, now what is server? Here, right now you are using a physical machine. But when you want to deploy some code, you will use servers. Dedicated machines will be there that you will rent for it. So we are renting for the servers by using a Microsoft Azure on a project level. So this server OS will be Linux. Okay, 90% servers operating system will be Linux, 90 to 95%. And Windows servers are also there, but that will be Windows Server. So those are from production level, they know about it. You are having Windows Server 2012, 2016, 2022, etc., etc. Okay, and I will show you demonstration how to launch server, connect to it. We will go through Azure VM service for this. Okay, and we will also practice some basic Linux commands today, and you will get idea regarding the same. So most of the cases when you are communicating with the servers, you will try from CLI, command line interface. Okay, there will be no user interface will be there, and everything you want to try like file operations, checking for the number of services which are in running state, or cache, etc., etc., logs, etc., etc. You will try from the command line itself. As for the networking, you should know number of ports. Suppose you are having a server or a machine. Here you are hosting a website. So by default, you are using port number 80 because it's running on a HTTP. Okay. Suppose you are having an HTTPS secure website. In that case, port number 443 will be used. Suppose you want to connect this machine via SSH. Now, what is SSH? That's a secure shell. From another machine you are connected your server, you will use SSH protocol in that case, and here port number 22 will be used. So number of ports are there. Total 65,000 ports are there. Out of some ports are predefined and you can remember it. So likewise, you are having
80 for HTTP, 443 for HTTPS, and 22 for SSH. Okay. And throughout the practice, we will revise it also. So don't worry about it. So Linux part is important, networking part is important, and also OSI layer. You must have heard about it. 7 layers are there, out of which, suppose you are trying for network load balancer, you will work on a layer number 4. For application load balancer, you will work on a layer number 7. Okay, total 7 layers are there as per the OSI layer. Then operating part, as per the system, you should know the types of OS which are available. So some are Debian based OS. Ubuntu is an example of it. Then RPM based OS are also there. So you must have heard about Red Hat operating system, which is from the Red Hat. Okay, it's an enterprise OS. Depending on Red Hat, CentOS is also there, but which is free. So suppose you want to go with the cost optimization, you can select for CentOS in that case. That is on a production level, but that will be decided by your cloud architect, cloud admin, etc., etc. Because here we need a subscription. But when you are using Red Hat from cloud service provider, that subscription will be added by cloud service provider itself. So Red Hat, CentOS, Fedora operating system, which comes under RPM based. And here you are having core Debian OS and Ubuntu OS, and some flavored OSs are also there from the Ubuntu. That will be part of it. So if you want to check for more details about how many operating systems are there, you can just simply go with distroswatch.com. Here is a ranking for it. So this is a distroswatch.com, and every minute, every day, new Linux operating system are being launched. So hundreds of operating system based on a Linux are there, and their significance are also there. Suppose you are going with the gaming, you want to try for ethical hacking, you can prefer for Kali Linux. If you are very new to the Linux, you can try for Ubuntu Linux. If your company is partnered with Red Hat, in that case, you can use Red Hat OS, CentOS, Fedora OS. So in the meantime, you can go through this website and read for it. Okay. Now we will just try for our first service from a Microsoft Azure. That service will be Azure VM. Okay, let's try for it. So it's like you are buying a physical machine. You can relate it to creating a VM, that is virtual machine. Now we will practice for creating a virtual machine in a data center. We will create it within a data center. You can select for any data centers which are available from a Azure portal. We will go with the default setting because this is your first session. So later on, I will explain you in detail. But today we will just try for launching an virtual machine, which will be of Linux type, Linux operating system, and then we will practice for Linux command today. Okay, let's try it. So within my portal, I have signed into portal.azure.com. Now here I am searching for virtual machine VM. Entering it. Okay, this comes under compute section. Whenever calculations are there, whenever hardware resources are there, that will be under virtual machines tab. You can click on create tab from here. 3 options are there, out of which you can just select first option, that is Azure virtual machine, create a VM hosted by Azure. Now responsibility of patching, responsibility of updation, that will be from Azure itself. And you are just using it. Here you can see a subscription. So in the start of the session, we have discussed that it's always with pay-as-you-go pricing. Okay, and at the right hand side, you can see the pricing for the same. This is the basic pricing of Azure VM, $83. Okay, and now I'm searching for $83 in rupees. So it will be 7,000 per year. And if you're changing the configuration, pricing will be minimized or maximized as per the configuration level.
So this tab is, I think, understood by you. That is subscription. Okay. Number of subscription, you can have more than one subscription as well in an account. Suppose you are having a developer subscription, enterprise level subscription, you can select that one as well. Okay. So while signing up for Azure account, you can select for the subscription which is suitable for you. Sure. Okay. So here I'm selecting my default subscription. Once your subscription will be activated, then it will be visible in your portal. You can also manually search for the site. Here I'm entering for subscription tabs after signing up. So here my subscription is visible, that is pay as you go, and there is subscription ID for this app. So subscription ID will be unique for every account, and you can cross check it whether later on you will work for infrastructure as a code or any other tools, like you must have heard about the Terraform. Over there you can mention for your subscription details in a script. So this is the subscription which are available. Now I'm again going for the home. Let's go to first setting, that is regarding resource group. Now here I am searching for resource group. You can see a resource group. For any deployment, whatever projects you are handling, you need to create a logical unit for it, logical bounding of resources. Okay, so I will try for creating a resource group. This will be region specific. Now what is region? Group of data centers. So we are having a group of data center that is Mumbai region, which is nearer to us. Or you can select for any US, UK, North, East, West type of data centers as well. Now let's create a resource group. Here I'm clicking on resource group, selecting a subscription. Okay, and I will just name it as my resource group, my RG. Selecting a region. So these are the regions which are available. From top to bottom, you can see Africa region is there, Asia Pacific, country wise, Europe, US East, West, and number of new regions are also there. So Azure is expanding itself. Atul, your Okay. screen again vanished. Yes. I think this is my Mac setting. Okay, number of regions are there, out of which, suppose you want to go with the user perspective. For example, take an example of Hotstar application that has been hosted in Asia. And if you're selecting and deploying Hotstar application to one of data center, you can select for data center which is nearer from customers and clients because of latency. So your latency should be minimum. That's the case. Likewise, depending on your client's requirement and customer requirement, you can select for region. That's the case. So as we are working for US and UK, we will select for US data center now because client will demand for it. So here I'm selecting for East US. Then I'm clicking on next, review and create, say yes, and click on create. So this is your first practice. You will try for creating a resource group. In Notepad, I'm just adding your first task will be sign up for Azure. Second task, create a resource group. In short, you can call it as RG. You can name it my RG. That's it. And these are region specific. So you are creating a resource group in a any respective region. That's the case. There are any region, Atul? I mean, I think there are a few regions which does cost lesser than Not that much difference is there. Suppose in particular region you are having VM cost like $7. So in one of regions that will be depending on their maintenance, it will be 7.0 point something likewise. Not that much. Only point difference will be there.
Basically, the nearest Ah, location. and your bill that will be generated, that will be converted to as per your country currency. So no issue regarding it. So here we have created for resource group. Now we will try for creating a VM virtual machine in a resource group. So here I'm refreshing the same. Here you can see my resource group, which is in EastUS. The research group may have logical It's a logical, VMs, possibly yes, storage, right. possibly database, data Hmm. store. Because when you are launching a VM, network will be used, disk will be there, and that will be selected from EastUS from here. Okay. So let's try for VM tab now. Here I'm selecting for VM again, clicking on create. So we have selected for subscription first. Now we need to select for resource group. Okay, that's it. That will fish over here. And automatically you can see region now has been updated to East US because my resource group is under East US. Can you change it? Let's say, or it won't allow it. Yeah, you can change it. Suppose you are changing this region, you again need to create a separate resource group. Okay, that will be a case. So you have to make sure that whatever the region group is, Hmm. have that particular geographical location assigned. You Right, have to select that. right. Or it will also try for replicate. It will replicate this region name, this resource group name in another region as well. Now I'm just naming it. This will be my virtual machine name. So I'm just naming it as my VM. Okay, you can take any name. Just make sure that no characters are included here. Numbers will be accepted, and no space will be accepted as well. So here I'm just naming it virtual machine as a my VM. This will be in a East US. Later on, we will see availability zones. Here I'm selecting a default availability zone. Most important part over here, you are selecting a operating system. So number of operating systems are there. Windows Server is there, Linux is there, Debian OS is there, Ubuntu is there, Red Hat is there, CentOS is there, lot more. Will be in the Windows, we will have the CIS, Center of Information Security, and security. And those are what we can say that those are like We will cover that. Network security groups are there. We need to cover. We will see that one. Right now, I'm just selecting Ubuntu server 2020 24.04. LTS means long-term support. 64-bit means it will also support for 32-bit applications as well for using. Generation 2, that's a recent generation. This is the size of machine. Okay, here you are getting 2 CPU cores with 8 GB RAM, and costing for it will be 83.22 per month. Suppose you want to change this machine configuration, you can select for see all sizes and select accordingly as per your requirement. But this is your basic account. So if you want to see higher type of configuration, which is not available in your case, because it's not a enterprise level subscription. That's the case. So here I'm selecting this standard D2 ADS general purpose virtual machine. General purpose means which will be used in a day-to-day activity in your project. Again, Your screen is not okay. visible. I'm going for the next tabs, and here I need to specify a key pair that will be used for authentication level. Let's check an username first. I'm just adding a username. For every machine, a default username is there, or you can modify the same. I have added my name. This key pair, which is used for authentication only. So we need to create a key pair. I'm just naming this as key. Now I'm explaining the whole concept. So you will launch a virtual machine and you will try for connecting it. Okay, this is your physical machine. So if you are having a key, then only you can connect to this view. That's the case. And that's why we are generating a key pair. Now suppose there will not be any key. So what will happen? Any other user
can also try for connecting it if you're having a credentials. That's the case. Key can be utilized for the rest of the machine. Whatever user which will try for connecting it, if key pair is present on his local machine, then only he can connect. Okay? So here we are having the key which is in encrypted format. So RSA is the algorithm. SSH format. SSH means secure shell. Okay, and for SSH connection, port number 22 will be used. And if suppose you're not ticking for this particular option, you can't access that machine. That's the case. It's a network security group. Okay, inbound rule. So there are two types of rules are there: inbound rule and outbound rule. I'm explaining the same. So here you are having a VM. You are connecting from your local machine to the virtual machine. So here inbound rule matters. And when any traffic going from virtual machine to the internet, that will be outbound. Okay. So if this is your local machine, this is my local machine, that is Mac. Okay. I'm connecting from my Mac machine to the virtual machine later on. So here in inbound rule, port 22, that is SSH connection needs to be allowed. So I'm just selecting default setting here. Okay, I'm allowing for port number 20. That's it. And then clicking on disk. So these are the disk setting. Later on, we will see in detail how to attach a disk. So this is the SSD. If your budget is low, you can select for HDD as well. Or if you are in a staging environment, you can select for lower configuration as well. But for production level, we will select for premium SSD here. Then clicking on network. So like we are having a Wi-Fi or LAN, here we are having a VNet. Later on, we will see VNet in a detail. Don't worry about it. I will cover it. And that's a default address 10.0.0/20. This one is a public IP which will be created later on and which will be available for connection level. So if any VM is having a public IP, then only you can connect from the internet. Else you can't. Then that's it. And I'm clicking on review and create. So until now, I have selected for operating system, that is Linux. I have created a key pair that will be key.pm. And I have created username. That's it. And I'm clicking on create. So key pair will be downloaded at the last, which will be in your downloads folder ultimately, or your machine configuration. So this has been downloaded in my downloads folder. You can see. Okay. And after that, And there is also restriction. Atul. I mean, if you download other, if you somehow delete it, then you cannot create it again. so in that case, you can have a new key pair. You can attach it to the existing VM and you can connect it. Or one copy of key pair is in metadata. So from here also, from terminal, from portal also, you can directly connect it via Azure CLI. This one CLI is there, so you can connect from there as well. Okay, so right now, I'm just showing you one of tab, that is all resources tab at the left hand side. So you can see along with this VM, one virtual machine has been created. Okay, one public IP has been created. Network security group is also created. That's defining inbound and outbound group. VNet, which is network interface, which is card, network interfacing card. This one is disk, and this one is a network watcher service. Now I'm just drawing a diagram so that you can understand properly. So as the architecture wise, Atul, your screen is not visible. okay. As per the architecture wise, this is your VNet. Okay. This one is your virtual machine. Here you are having disk which is attached. This VNet is having a subnet that is part of network. Later on, we will just see in detail. And here we are having a IP, public IP. So if somebody wants to connect it,
he will go through internet to selecting VM. And here is your network security group, which is allowing for the traffic. And suppose you are having a local machine, your traffic go from here to this virtual machine likewise. This will be whole architecture that we have tried now. And if you are connecting from SSH, from here, you will enter for the details of VM. So every virtual machine will have username, okay, one public IP and DNS address. Either you can try for IP or DNS address. So you are entering username at this public IP and you can connect it via SSH. So SSH hyphen I, here will be your key details, username at public IP. This will be your whole command. We will see that for connecting this VM. But for connecting any VM, this VM should be in a running state. Right now, this VM that we have launched, which is in a running state. So let's check out. Here I'm going through my portal. And here I'm selecting a virtual machine tab. You can see that now this VM in a running state. So there are different states are there for the VM. Either it will be in a stop state if you're fully stopping it, or it will be in a hibernate state also, and terminated state. That's it. Now we can connect it. So here I'm selecting a VM, clicking on connect. This one is a connect via version. In case you are not having a public IP, you can connect via version, but that's on a higher level. Now I will try for connecting it from my native machine. So here I'm clicking on connect via SSH, checking access details. So if port 22 will be added in inbound, then only you will get access for this VM. So that will be in a green color. And this is the whole command. You can see this is the whole command. I'm just copying it. I will modify it. So my whole command is SSH, that is secure share, hyphen I, which is used for identity, key pair path. Now in my case, if I'm checking it, my key pair path is key.pm. I will just modify it, key.pm. My username will be Atul because I have defined it. One second, here is screen visible. Okay. So my username is Atul at this will be my public IP. Then only I can connect to this machine. So I'm just copying it. I will try for connecting it from my terminal. In your case, those who are on a Windows, they can use PowerShell over here. Okay, this for this practice. I will navigate to downloads folder first. So I will type the CD space downloads. I'm pressing tab, which will auto complete it. Entering it. So I'm in a downloads folder. Now there are two commands, CD, which is used for changing directory. PWD, which is present working directory. You need to remember it. So I'm writing it down as well. So what is CD? Change directory. That's it. What is happening every time you are practicing from user interface, and this is from command line. PWD, that is present working directory. Present working directory. One more command that we will try for this practice, that will be chmod command. I will explain it in detail. Don't worry about it. Chmod 400 key pair name, that is key.pm. Because we will use this key pair, which is in a downloads. We have downloaded this key pair and which is in a download. So if I'm going with ls command, you can see key.pm is over here. Okay. Now one more command you need to remember, that is ls. This is used for listing of files and folders. Listing files and folders in correct directory. Current. I can't see your screen. Just a second. Current directory.
So until now, we have tried for cd command, which is used for changing directory, pwd, which is present working directory, ls command, which is used for listing files and folders, chmod, which will change the permissions of key.pm, which will apply read permission. So there are three type of permissions you can try. R, which is used for reading, W, which is used for writing, and X, which is used for execution. Okay. For reading, we are having 4. For writing, we are having 2. And for execution, we are having 1. So if you are adding 400, the meaning of it will be read permission for first user. So here you are having, so this one is a first user, second digit, which is a group, and third, which is a global level. Okay. And suppose I want to add read permission only for first user. So for read, we are having 4, another 0. Means read permission will be added to current user. That's it. And that's why I will change the permission chmod 400 key.pm. Suppose I want to add full permission, read, write, execute for current user. That will be 7 here. 4 plus 2 plus 1, 7. Read, write, execution. Suppose I want to add full permission for group level. That will be 7. And full permission on a global level, that will be 7. So if you are adding chmod 777 means full permission for all. And for this user only, so you can try for 400 here. So I'm trying for chmod 777, keep your name. I'm clearing this screen here with clear command. Chmod 400, keep your name, that is key.pm. And now I will try for connecting this machine. This will be my command, full command. I'm just copying it and pasting it over here. So it will ask whether you want to continue, say yes. And in this way, I have connected with this instance. You can say that, see that at the left hand side, my username is there and my virtual machine name is there. Suppose I want to go out of this, I will try for exit command. And again, I'm at my local machine. I want to connect it again. I can fire the same command from the same path and I will be connected to my virtual machine. Now, for freshers, I am repeating, you are renting a VM from a data center. It's not a software. Actually, it's happening in a rack configuration from a data center. So we have rented this VM and now we have connected remotely from my local machine to the data center from the, I guess, North Virginia data center, which is from UK, US, UK. Okay. So this one is a Linux machine. So the first command that we will try, that is for update. Okay, I will just check with basic commands first. Now let's revise for first command. pwd, present working directory. I'm in a home folder. Then this is my username, that is Atul. Now this Unix operating system, which is a military operating system. Okay. And whenever war is over, militant or any soldier is coming back to the home. Understood? So that's why this directory is a home directory where user is always there. Previously, Unix was military system. Any militant or any soldier after the war coming to the home. So that's why your default directory is home here. Secondly, you must have heard about the kernel. Okay. So kernel is controlling the tool. And here your OS is controlled by the kernel. So on top of kernel, your operating system is running on actually. And below that, you are having hardware. Then here I'm going through ls command, which is for listing. You can see no files and folders are there. Now let's try for creating a directory. I will try for creating a directory via
mkdir command, that is make directory command. So you need to remember it. You can remember it, mkdir make directory, and directory name I'm just entering it as a new. Again, I'm trying for ls. You can see a directory has been created, that is new. Suppose I want to create a file, I will try for touch command in that case. So touch space name of file, for example my file, and extension that is txt, entering it. So this will be a file that has been created, that is my file.txt. So you can remember these commands one by one. I'm also listing for the same. First of all, we have tried for cd, that is for changing directory, pwd, that is for present working directory, ls for listing files and folders, mkdir, which is for creating a directory, mkdir, create directory. Then touch command, which is for creating a file. Touch space, for example, you can take a.txt, means this is a text file with name as a. So that will create a file. Create file. Suppose you want to create a Python file, hello world.py. So you can go with touch space hello world.py. That's it. So until now, we have created a directory, we have created a file. I'm going through ls for listing. Suppose I want to move this file from this directory to the new directory. I can try for mv command. mv space whatever files I need to move. My file tab space name of folder, that is new. Entering it. Again, I'm going through ls. You can see that file has been gone and which will be part of new folder now. So mv command, which is used for moving files. Move files from source to the destination. Okay, here you can have a source to the destination. And suppose here I'm having a new folder. I want to enter into new folder. So again, I can try for cd command, change directory, cd space name of folder new. So my directory path has been changed. And if I'm checking for pwd, present working directory path, you can see I'm in a home folder, Atul, and again new folder. Suppose I want to go out of this, I can try for cd space dot dot. So if you are entering cd space dot dot, you will be in a parent folder again. Again, you can try for ls and folder will be there. So after cd, you can also practice for the cd dot dot. Okay, that's it. And you can also add cd space name of folder, and you can have an entry of it. Now what I will try, I will go to cd new. Here I'm having my file.txt. Now I will try for adding some content into this file. What I will try, I will add some contents into this file. So you can use Vim editor or Nano editor for this case. So Nano, which is pre-installed, or you can also use VI editor. Okay, I'm entering Nano space name of file. I'm pressing tab. So every time you can press tab, which will auto-complete this command. And that's why Linux is more famous. Okay, so I have opened this file. I will just write content, hello world. That's it. And I will save it via Control S. And I will close this via Control X. Now I want to check for contents of this file. I can try for cat space name of file, cat space my file.txt. You can see these are the contents of the file. So one more command you need to remember, that is cat for checking contents of the file. Check contents of the file. And that, for example, cat space name of file, you can go with a.txt, etc., etc. You can see a file.
Now suppose I've created new file, touch space b.txt. Again, I'm going with ls. You can see I'm having my file.txt which has the content, but b.txt which is empty one. Okay, I want to copy content from my file to the b.txt. I can use cp command, that is copy command. Cp space my file.txt space b.txt. Entering it, and now I can check for cat command, which will show contents of this file. Cat space b.txt. Entering it, you can see hello world text has been copied to the b.txt. So until now, let's revise. PWD, which is present working directory, ls for listing files and folders, mkdir for creating a directory, touch command for creating a file, mv command for moving a file, cp command for copying something, cp copy contents of the file, cat for checking contents of the file. Okay, cat space name of file. अरे यार एक सेकेंड ना ये अनशेयर हो जाता है. Okay, these are the commands you need to revise, and until your work will be done, we can go with the exiting it. Now here I am going with clear command, which will clear the screen. Clear command, which is used for clearing the screen. If you want to see whatever commands you have fired, you can try for history command in that case. And whatever until now, whatever commands you have fired, it will be listed. So two more commands, which are basic one. You can try for history, and you can also try for clear command. So as this is your first session, I'm just taking this type of commands only. I'm not taking advanced command or intermediate commands, but you can practice the same. And once your work is done, now I will showcase you how to exit from here. So I'm going with the exit command. You can see this connection has been closed, but still your virtual machine, which is in a running state. So if you are deleting it, then only your billing will be stopped, else your billing will be calculated. So once your practice is done, you need to select this VM. You need to select it and go with the delete option. Select delete. Select this option and click on delete. This will delete a VM. So at last, I'm just adding a step. You need to create, okay, just let's try for one by one. So task one that you need to perform at home, that will be sign up for Azure account. You can try it from portal.azure.com. Okay, second task that has been practiced by us, launch and connect Azure virtual machine and perform Linux commands. First of all, you will create a resource group. After creating a resource group in a particular region, here you can select a region. First step, you will click on create VM. You can name this VM. You can create a key pair that will be with .pm extension. After creating a key pair, also you can name this VM, and you can select for OS, that will be Linux OS. Okay, you can select for Ubuntu 22 or 24.04 or 07, whatever it may be. Now there is a meaning for it. Suppose this Ubuntu operating system it came in a production level at the 2022 year, it will be 22. 04 it's a month. 07 is also month. So 2 times they are releasing their product in a year. That's why 22.04, 22.07 likewise are there. And LTS, which is stand for long-term support.
So you are selecting an OS type of instance. Okay, you can select for at least two cores of hardware architecture, and then you can launch. That's it. After launching, you need to go with the downloads folder. So you can try for CD downloads from your PowerShell. Okay, you can try from your PowerShell. I know Windows is your favorite operating system, but for Linux or for cloud, you need to try everything from the Linux. Okay, so you can try for CD downloads, then go with the correction command and practice these commands. And after practicing, you can try for exit command here. You will be out of it, and then you need to delete VM. That's it. Azure VM. So I'm pasting these steps on a group. Okay, this is chmod command. So when you are connecting this VM from Linux or Mac, in that case only you can try for chmod command. If you are trying from Windows, don't try for the chmod. So I'm copying everything from here, pasting in a chat. Just go through the steps, and if you have any doubt, you can ask. अरे यार ये पूरा कॉपी नहीं हो रहा. And you can ask questions in Hindi, Marathi, English. I know all three languages. Atul, I have a question here. So every time when we will create the resource group and all other things and we perform the practice, once the practice is done, we have to delete the VM, right? Right. And again, maybe like tomorrow, again, when I need to begin my new practice, then again I have to create my own VM. Right. If you want to save the cost, in that case you can try. And if you're having some credits, likewise AWS credits are also there, and Azure is also providing some credits. In case of .edu email ID, or if you're having a company account, in that case you can just keep it running. That's the case. But at the production level, everything will be in running state. You will just simply connect to it, and delete permissions will not be there as a user perspective, because admin will have resource lock. Okay. So you can't delete a VM. That's the case, because the VM will be launched with the lock state only. Okay, I got it. But I was when I was looking at the portal, I saw that there is a stop option as well. So if I stop it, will the billing stop? Yeah, you can stop it, but the storage will be billed only. Okay. So that would be chargeable. This will be charged. Yes. Okay, got it. Yes. Any other doubt? अकाउंट क्रिएट करतो आहे तर दोन ऑप्शन आहे. ते असे गोष्टी म्हटलं ते आणि अनदर वन इज Azure फॉर फ्री. सो जर मी फ्रीचं जर चेंजेस चेक करत आहे ना, त्याच्यामध्ये जर मला सर्व्हिसेस फ्रीमध्ये अफोर्ड करायचं नसेल, तुम्हाला काहीतरी 750 आवर्स तुम्हाला फ्रीमध्ये डिपेंड करतं व्हर्च्युअल मशीन, म्हणजे ओके फॉर अस, म्हणजे आपल्या फॉर प्रॅक्टिस पर्पज नाही. ऍक्च्युली कसं येते, जसं आपण लहान मुलाला चॉकलेट देतो तसंच येते, की ते फक्त प्रॅक्टिस साठी पण तेवढं इनफ नाहीये. एक 1 GB रॅम असलेलं कॉन्फिगरेशन असलेलं व्हर्च्युअल मशीन आपण किती वेळ युज करणार, याचं पण लिमिटेशन आहे. किंवा तुम्हाला हाय लेवलचे जेव्हा वर्कलोड प्रॅक्टिस करायचे, त्या केसमध्ये बिल तर येतच राहणार. जसं की आता क्युबरनेटिसचं क्लस्टर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचंय, तर ते ऍक्च्युली क्युबरनेटिस हे टूल जे प्रोडक्शन लेवलला युज होतं. तुम्हाला जरी स्टेजिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये जरी क्रिएट करायचं झालं, तर नंबर ऑफ नोड्स लागतील, त्यासाठी नेटवर्क लागेल, सबनेट्स लागेल, IP लागेल, भरपूर कॉन्फिगरेशन लागेल, तेवढं बिल तर येणारच. जोपर्यंत तुम्हाला बिल येणार नाही किंवा तुम्ही हाय लेवलचे कॉन्फिगरेशन जोपर्यंत ट्राय करणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही ते लर्न नाही करू शकणार. आणि ते पब्लिसिटी करताना म्हणतात की फ्री आहे काही सर्व्हिसेस, पण त्याचा काही फायदा नाहीये. आणि इव्हन दो आता जे तुम्ही अकाउंट युज करतायत, तिथे 5 पेक्षा जास्त व्हर्च्युअल मशीन सुद्धा तुम्ही लॉन्च नाही करू शकत, कारण त्यांनी त्याचं लिमिटेशन लावलेलं आहे.
5 पेक्षा जास्त IP सुद्धा आपण हे नाही करू शकत, किंवा ते एंटरप्राइज लेवलचं मग सबस्क्रिप्शन तुम्हाला घ्यावं लागेल, किंवा डेव्हलपर टाईपचं सबस्क्रिप्शन असतं, जसं मी आपण इथे दाखवतो तुम्हाला. So when you're clicking on sign up for Azure account, so here we are having a number of subscriptions, type of subscriptions are there. Okay, that's a free account. And here you can see 20 plus popular services free for a month, free for 12 months only. But your subscription will end in a 1 month only. That's the case. You need to free account, which is for 1 month only, 30 days. Here you can see. Move to pay as you go pricing to continue beyond 30 days. तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं इसमें अकाउंट साइन अप करने के बाद, लेकिन ये 1 मंथ तक ही रहता, कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे पे एज यू गो पे सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करना पड़ेगा. तो मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन है पे एज यू गो, और फ्री अकाउंट आप एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में उसको ये करना है, अपग्रेड करना है, वो ध्यान में रखना. अभी बिल नहीं आएगा 1 मंथ आपको कुछ, अगर फ्री अकाउंट लेते हो तो, लेकिन पे एज यू गो में बाद में कन्वर्ट करने के बाद अगले 1 महीने में आपको बिल आ जाएगा. तो 2 मंथ कुछ टेंशन नहीं है आपको, और बिल ज्यादा भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन है. और अगर कुछ ज्यादा ही बिल आ जाता है, कुछ छूट जाता है, तो आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर से. और वैसे तो यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज टैब दिया है, तो AWS के केस में वो अवेलेबल नहीं है, तो कुछ रनिंग में छूट जाए ना तो यहाँ पे दिख जाता पूरा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी VM तो डिलीट कर लिया, लेकिन बाकी सारे रिसोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं, तो खाली सिलेक्ट करके मुझे डिलीट बोलना है, दैट्स इट. तो प्रैक्टिस करते वक्त इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं है अज़ूर के केस में, अब ये सारी टैब्स अगर यूज कर लेते हो. और अगर आप में से कोई फ्रेशर है, अभी कॉलेज में है, .edu ईमेल आईडी है आपके पास, तो $100 फ्री में मिलते हैं, तो उसको भी रिडीम कर सकते हैं आप. यहाँ पे आपको एजुकेशन टैब में जाना है, इन केस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स खाली बोल रहा मैं. यहाँ पे आपको साइन अप करके एजुकेशनल ईमेल आईडी से आपको $100 मिल जाएंगे. और अगर कुछ इवेंट्स वगैरह अटेंड करते हो माइक्रोसॉफ्ट के, तो आई गेस वो पहले देते थे, अभी तो नहीं देते उतने ज्यादा क्रेडिट्स वगैरह. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. यस, कुशल, मोहसिन, नैन्सी, नयन, ऋत्विक, श्रीनिवास, डू यू हैव एनी डाउट्स? No, I'm good here. Okay. So in layman language, what is like resource group known as? I mean, from It's a the logic bounding of resources. Mhm. ग्रुप कर देते हैं खाली रिसोर्सेज को. जैसे Okay. आप कोई रिसोर्स ग्रुप बनाते हो, तो प्रोजेक्ट में Mhm. समझो आप नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, स्टोरेज यूज कर रहे हैं, Mhm. वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हो, वो आप उस रिसोर्स ग्रुप के अंडर डालोगे, और जब भी आप रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार देते हो, वो सारे रिसोर्सेज चले जाएंगे. Okay, so it's like the center of everything. Okay. हाँ, क्योंकि हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम करते वक्त बहुत सारे रिसोर्सेस रहेंगे ना, तो कभी टैग वैल्यू भी ऐड करते हैं हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, या किसी प्रोजेक्ट में अगर क्रॉस चेक करना है तो अच्छा जाएगा वो. Okay. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल ट्राई फॉर लॉन्चिंग एन Azure VM ऑफ विंडोज टाइप. अभी तक हमने क्या किया, लिनक्स वाला ट्राई किया, अभी ट्राई करेंगे विंडोज वाला. यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा, तो एक्सेस करते वक्त प्रोटोकॉल का डिफरेंस है. सो हियर यू विल यूज RDP प्रोटोकॉल, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, which is at port number 3389. ये प्री डिफाइंड पोर्ट है एंड यू कैन रिमेंबर इट. तो SSH के लिए प्रोटोकॉल कौन सा था? 22. RDP के लिए रहेगा 3389. So process is same. We will launch a Azure VM, but we will only select for
operating system, which is Windows now. I will try for Microsoft Windows Server. And whatever machine type you will select, make sure that that virtual machine is having 4 GB RAM, at least 4 GB RAM. Else don't launch it, because it will have some challenges for connection level only. That's why. So select for VM. अतुल एक क्वेश्चन होता. हम्म. आम्हाला इथान्स कडनं काही भेटणार आहे का की म्हणजे प्रॅक्टिस सेशनसाठी पोर्टल्स वगैरे काही असं? नाही नाही नाही, ऍक्च्युली ते काय होतं, त्याचं बिल जनरेट होतं. आता समजा एखाद्या स्टुडंट कडून चूक झाली, इन्स्टन्स रनिंग मध्येच राहिला 1 महिन्यासाठी, तर टोटल बिलिंग जास्त पण जाऊ शकतं. याला लिमिटेशन नाही काही. ओके. त्यामुळे तुमच्या अकाउंटची जबाबदारी ही तुमचीच असेल. ओके. ऍक्च्युली ठीक आहे. Okay, so here now we will try for selecting a VM which is of Windows type now. माझ्या आधी काही असे स्टुडंट होते ज्यांचे एक 24,000 22,000 पण गेला आलं होतं. तर तुमच्या हँडलिंग वर मी विचारलं होतं त्यांना, तर ते बोलले की प्रोव्हाइड करतील म्हणून. सो दॅट्स वाय म्हणून. कारण जिथे कॉस्टिंगचा पार्ट येतो तिथं कोणी हात नाही घालत. नाही, त्यांनी मला, मी विचारलं होतं त्यांना, ते हो बोलले होते म्हणून. ते कन्फर्म करून घ्यावं लागेल त्यांच्याकडे. ठीक आहे. सो नाउ वी विल ट्राय फॉर विंडोज सर्व्हर. तसं पण तुम्ही साइन अप केल्यानंतर 1 महिना तर बिल नाही येणार, क्रेडिट्स भेटतात तुम्हाला. एक 22,000 क्रेडिट्स असतात. ऍक्च्युली त्यात पूर्ण सर्व्हिसेस नाही भेटत ना, जसं आपण आता डेव्हऑप्स वगैरे किंवा Azure पूर्ण रिसोर्स नाही भेटणार. मग प्रॅक्टिस करायची म्हटल्यानंतर पूर्ण रिसोर्सेस तर लागणार ना. 1 मंथ आहे तोपर्यंत जेवढ्या सर्व्हिस कव्हर होत आहेत तेवढं तर करणार आपण. आणि जेव्हा तुमचं पे ॲज यू गो जाईल तेव्हा मग हाय लेवलचं तुम्ही ट्राय करू शकता, किंवा तुम्ही दोन्ही साइन अप करू शकता. फ्री वाला अकाउंट पण तिथेच आणि पे ॲज यू गो वाला सबस्क्रिप्शन पण तिथेच. तर जे फ्री वाले रिसोर्सेस आहेत ते तुम्ही फ्री अकाउंट मध्ये प्रॅक्टिस करा, आणि जे हाय लेवल लागते ते पे ॲज यू गो मध्ये ट्राय करा. त्याच्यानुसार 2 बिलिंग येतील तुम्हाला. किंवा जर कोणी तुमच्या ओळखीचे कोणी जे एज्युकेशन मध्ये आहेत, .edu ईमेल आयडी आहे कॉलेजचा किंवा युनिव्हर्सिटीचा, त्याच्या थ्रू तुम्ही क्लेम करून घ्या. मग त्यांचं अकाउंट, त्यांच्या नावाने अकाउंट साइन अप करून घ्या, त्याच्यात $100 भेटतील तुम्हाला. ते यूज करा. आपलं क्लासचं ड्युरेशन जरा जास्त आहे ना, त्याच्यामुळे जरा इश्यू होऊ शकतो. ओके. हा, ठीक. Okay, so I'm going through virtual machines. Plus sign, Azure virtual machine. Resource group, you can select existing resource group that will be listed over here. I'm naming this virtual machine as a Windows server. Okay, you can have any name. I'm just writing as a Windows here. Selecting region East US. Zone 1, default one, and in terms of image only, I'm selecting Windows Server, this one. And also make sure that you're selecting a good configuration over here. So I've selected for D2S 2 CPU core at 8 GB RAM. Configuration is enough for us. And I'm adding username and password for this machine. Adding a username, adding a password. Make sure that password is combination of characters, numbers, so that it will be good practice. And you need to remember it. So you will enter password 2 times, confirming the same. Green tick will be there if both passwords are same. Then selecting inbound role, that will be remote desktop protocol. 3389 port number is predefined. And if you're hosting a website, in that case only you can have a HTTPS. Okay. And I will try for selecting these 3 port numbers: HTTP, HTTPS, RDP.
Then I'm selecting the next tab, selecting this. I'm keeping this as default. And at last, I'm clicking on review and create. So if your all configurations are set, you will get a green tab over here, that is validation passed. Click on create. And in this way, you can launch a Windows type of virtual machine. So your third task for today, that will be launch Azure VM of Windows and make sure that it has more than 4 GB RAM. Now we will connect for this machine via RDP, remote desktop tool. So in your Windows, you are having remote desktop tool. If you're searching on a start button, you will get details for the same. In case of Linux, you can use Remina. In case of Mac, you can have Chrome RDP or any RDP tool, and you can use it for remote connection. Right now, my virtual machine has been launched, and I can check for the same from a virtual machines tab. Here you can see it's in a creating state. Just wait for a few minutes, and it will be in a running state. No, Atul, I can't see your screen. Okay. One second. Okay, now you can see deployment successful message. And now we will try for connecting it. So connect is the option. You can select it, connect, click on connect. So this is your setup that you can open it and enter username, password, and public IP or DNS. So 3 fields are important here. That is public DNS or IP, username, and password. If these 3 credentials are right, in network security group, RDP protocol T389 in inbound is added, then only you will have a successful connection. Else you will get an error. I'm repeating. For remote desktop connection, public DNS, username, password, and RDP rule, which is required. And your machine should be in a running state, then only you can connect it. So here I'm clicking on connect by RDP, checking for access. Here you can see public IP port and download this RDP file. Here is my username, that is Atul. Screen ayana. Okay. So this is my RDP setup. I'm just opening it. So it's directly going with DNS record. Okay. Username already added and password. I'm just entering. You need to remember your password and click on continue. Accept certificate tab will be there. If 3 credentials are right, accept certificate tab will be there and you will be connected. So in this way, I have launched a Windows virtual machine in US data center and remotely I have connected to it. ओके ये है आपकी थर्ड प्रैक्टिस. आपको क्या करना है, विंडोज वाला वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है, उसको कनेक्ट करना है. ठीक है, आज के लिए इतना प्रैक्टिस ही लेंगे क्योंकि ज्यादा लूंगा तो आप डर जाओगे. वैसे भी हो जाता. और अभी आपको क्या करना है, सबको आपको साइन अप करना है पहले तो अजूर के लिए. और ये जो प्रैक्टिस अभी हमने प्रैक्टिस किया ये भी परफॉर्म करना है, स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना है. ठीक है, कुछ चैलेंजेस आते हैं तो मैं आपको गाइड कर लेता. और
नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस कनेक्शन। तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्लोज करने के लिए खाली क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। बाद में इस वर्चुअल मशीन को जैसे उन्होंने बताया स्टॉप भी कर सकते हैं आप, या उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप कर दोगे स्टिल स्टोरेज का बिल आएगा, अगर आप पूरा डिलीट मार देते हो तो बिलिंग यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो हियर आई एम सिलेक्टिंग एन VM, going through delete button and clicking on delete. That's it. और यहाँ पे all resources टैब मत भूलना, या इसको बेंचमार्क करके रखना, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बहुत काम में आ जाएगा बिलिंग बचाने के लिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट, अप्लाई एंड फोर्स डिलीट। फोर्सफुली डिलीशन भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। और प्रोडक्शन लेवल पे कुछ भी डिलीशन के लिए ट्राई मत करना। जब भी आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में प्रोजेक्ट के ऊपर, वहां पे भी आपको डिलीट के लिए ट्राई नहीं करना है। तो जॉब स्टार्ट होने से पहले निकाल दिए जाओगे। अभी आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी है इसकी। तो जो भी आपके वर्चुअल मशीन्स रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कौन करेगा? तो क्लाउड आर्किटेक्ट डिसाइड करेगा, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। या इसका एक्सेस किसको दिया जाता है? डेवलपर्स को, मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। कि जहां पे आप कोड रखोगे हमेशा ये सर्वर रनिंग में रहेगा, कोड वहां पे होस्टेड रहेगा। ये हो गई उसकी रिक्वायरमेंट। स्टेजिंग एनवायरनमेंट में वेबसाइट होस्ट करके देखना है, उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहना है, तो VM के अंदर भी कर सकते हैं। और VM की साइज प्रोडक्शन लेवल पे मेटल टाइप के इंस्टेंसेस रहते हैं, जिसका रैम कॉन्फ़िगरेशन रहता 24 GB से भी ज्यादा या 32 GB से भी ज्यादा रहता। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बहुत सारे अवेलेबल है। कॉन्फ़िगरेशन लॉन्च करते वक्त आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ स्टोरेज ऑप्टिमाइज रहते, कुछ कंप्यूट ऑप्टिमाइज रहते। कंप्यूट ऑप्टिमाइज यानी जहां पे रैम कॉन्फ़िगरेशन आपको ज्यादा मिल जाएगा। स्टोरेज ऑप्टिमाइज यानी जहां पे डिस्क आपको ज्यादा मिल जाएगी, ओके। और कुछ जनरल पर्पस भी रहते हैं कि जहां पे स्टेजिंग एनवायरनमेंट में आप जनरल पर्पस वाले वर्चुअल मशीन्स भी यूज कर पाओगे। बिल थोड़ा कम आता उसमें और कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से सेट हो जाता। हाँ, तो जो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो भी लिनक्स के जो इंस्टेंसेस है या वर्चुअल मशीन है उसकी विंडोज ओएस से कम रहता प्राइसिंग, और ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं लिनक्स VMs को, ठीक है। तो जो टूल्स आते हैं अभी मार्केट में, जैसे कि डेवऑप्स में काम करना है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ सेट करना है, तो लिनक्स वर्चुअल मशीन्स प्रेफरेबल अच्छा रहता मेंटेन करने में भी। हाँ, यस, आपका क्वेश्चन था। ना AWS में कैसा होता है, we do have ना कि हाँ। machines क्या यूज करने वाले हैं, it shows you some sort of amount calculator हो गया, do we have anything in Azure as well? हाँ, रहता ना इस पे कॉस्ट कैलकुलेटर रहता। हाँ, exactly. So it will show us before actually implementation की ये हाँ, ये रहता जो प्राइसिंग कैलकुलेटर भी रहता। तो AWS के केस में भी आप इसके डिटेल्स डाल सकते हैं सर्विस वाइज। जैसे कि समझो मुझे अभी मैं वर्चुअल मशीन लॉन्च कर रहा, जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया एक VM, ठीक है, ये लिनक्स वाला है। यहाँ पे रीजन स्पेसिफिक जो आपको सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे ईस्ट यूएस ले लिया मैंने, यहाँ पे लिनक्स ले लिया, ओके। लिनक्स में भी मैंने लिनक्स में भी मैंने उबुंटू ले लिया, स्टैंडर्ड है। और ये है इंस्टेंस का टाइप, ठीक है। यहाँ पे 8 GB रैम वाला D2V3 ले लिया, तो इसका ईयर वाइज कॉस्टिंग आपको मिल जाता। ये सेविंग प्लान है, मतलब जैसे हम लोग प्री बुक भी कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए यूज कर रहे हैं, 3 इयर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता। जैसे अभी 3 इयर्स का प्लान जो है उस पर 53% डिस्काउंट आपको मिल रहा। तो इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि इसका $32 से बिल आ जाएगा। या 1 ईयर के लिए मैं इसको चार्ज कर लूँ तो $48 ही काम आ जाएगा। पे एज यू गो ले लूँ, तो जो भी कॉस्टिंग बच रहा है ना उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और फिर डिसाइड कर सकते हैं। इसमें डिस्क का स्पेस
एचडीडी सिलेक्ट कर रहे हैं, एचडीडी चाहिए, एचडीडी का अभी बिल कितना दिखा रहा, $70। एसएसडी सिलेक्ट कर लिया तो बिल थोड़ा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे अभी एलआरएस और जेडआरएस है, ये लोकली रिडक्टेंस स्टोरेज और जोन रिडक्टेंस स्टोरेज रहता डेटा सेंटर के हिसाब से। आप रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको समझो प्रोडक्शन लेवल के वर्कलोड्स है तो उस केस में हम लोग लोकली रिडक्टर नहीं लेते, जोन रिडक्टर लेते, एक कॉपी बना के रखते हैं एक्स्ट्रा में, बाद में बैकअप के लिए या उसमें यूज में आ जाता है। ठीक है, और लास्ट में ये आपको प्राइसिंग दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये जो प्लानिंग है वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपका आर्किटेक्ट डिसाइड कर लेगा। हाँ राइट, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में रहेगा, या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड है कि उनको हमें क्या सर्विस देनी है उसके ऊपर। और हमारे डेवलपर्स कौन से या कौन से टाइप का डेवलपमेंट करना है वो भी है। जैसे समझो कि आप .NET पे कोई प्रोजेक्ट्स अभी हैंड ओवर करना है तो विंडोज प्रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे VS कोड, बाकी इंटीग्रेशन, फिर लाइसेंसिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा, डेवलपर्स अच्छे से कोड कर पाएंगे। बाद में डिप्लॉयमेंट करते वक्त आप क्या अभी कॉपी भी कर सकते हैं, लिनक्स में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो डॉकर, क्यूबरनेटिस, डॉकर कंटेनर्स वगैरह आ गए। एक बार इमेज बना दिया तो कहीं पे रन हो सकता है। इस और कुछ डाउट? अभी आप में से किसी के पास अकाउंट है अज्योर का? मेरे पास है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है। ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो अभी और हाँ। चेक कर लो। हाँ ठीक है। हाँ, सेशनची रेकॉर्डिंग भेटेल तुम्हाला। सेशन में सबको लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही ज्वाइन करना है, उसके लिए प्रेफरेंस दो। और जब भी मैं प्रैक्टिस कवर कर लूँ, आपको क्या करना है, स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना है सेशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपके जो चैलेंजेस है, डाउट्स वगैरह सॉल्व करने में इजी जाएगा। बाद में आप 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें एक VM लॉन्च करने के लिए ट्राई करिए। तो पहले तो आपको घबराना नहीं है तो रहता ना, तो ध्यान में रखना। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपको ही है, क्योंकि इंटरव्यूज में अभी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। अभी वो नहीं पूछेंगे कि इसका फुल फॉर्म बताओ, ये क्या रहता वो रहता, नहीं, डायरेक्टली आपको यूज केस देंगे या पूरा सिनारियो डॉक्यूमेंट वाइज दे देंगे और उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो जब आप ये सर्टिफिकेशन की एग्जाम भी देते हो, उसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे हमने अभी आज वर्चुअल मशीन लॉन्च किया, कनेक्ट किया, राइट, तो ट्रबल शूटिंग पार्ट वाला क्वेश्चन रहेगा कि एक क्लाइंट ने वर्चुअल मशीन लॉन्च किया US ईस्ट में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लॉन्च किया, कनेक्ट किया, कनेक्शन में ट्रबल शूटिंग है, क्या सोल्यूशन रहेगा उस केस में। तो आपका सोल्यूशन क्लिक होना चाहिए कि पहले उसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जहाँ पे 3389 पोर्ट नंबर एडेड है क्या। और एक क्वेश्चन रह सकता है कि आपने VM लॉन्च किया, कनेक्ट किया, वहां पे वेबसाइट भी होस्ट कर दी, लेकिन वेबसाइट एंड यूजर को विजिबल नहीं है, तो क्या सोल्यूशन दे सकता है। तो उस केस में भी आपको क्रॉस चेक होना चाहिए या क्लिक होना चाहिए कि उसका सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट 80 एडेड है क्या, 443 एडेड है क्या। पोर्ट 443 और 80 एडेड है, फिर भी वेबसाइट नहीं दिख रही, यानी आपने उसकी सर्विस स्टार्ट नहीं करती। जो भी सर्वर रहेगा, अपाचे सर्वर रहेगा या कोई और भी सर्वर रहेगा, तो वो भी स्टेटस चेक करना पड़ता। जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी रहती जहां पे कोड आपको स्टोर करना है, जैसे index.html रखना है, वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो भी सोल्यूशन ले सकता है। तो बहुत ज्यादा अलग अलग सिनारियो रहते हैं, उस हिसाब से आपको रिलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही, जो ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, उसका डिस्क्रिप्शन ही वहां पे दिया रहता है। आप प्रैक्टिस करते वक्त ही उसको रीड कर पाएंगे अच्छे से। और जो फील्ड्स नेसेसरी है वहां पे स्टार दिखेगा आपको, वो आपको ऐड ही करना है। हाँ,
यहाँ पे आपको इमेज सिलेक्ट करना है, क्लिक कर दीजिए। जोन तो सेम ही रहेगा है ना, दिख रहेगा। जो है सही। हाँ हाँ लेट्स गो विथ विंडोज हाँ चलेगा, 2019 डेटा सेंटर। हाँ चलेगा। ओके, खाली इंस्टेंस का साइज क्रॉस चेक कर रहे हैं ना, कितनी रैम है। अभी यहाँ पे 1 GB रैम दिखा रहा, ठीक है, विंडोज वाला मशीन है तो ज्यादा रैम लगेगी। नीचे आना थोड़ा, यहाँ पे हाँ, अभी साइज चेंज कर लो आप। हाँ, ये आई थिंक 16 GB रैम है क्या? हाँ। ठीक है, चल जाएगा। यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। इसको पब्लिक रखना है या हाँ पब्लिक ही रहेगी। तो जैसा है वैसा ही रहेगा ये? हाँ हाँ ठीक है, ओके। एसएसडी रखें? हाँ एसएसडी रेडी। वैसे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे हम लोग आगे जाके। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ओके। ओके, नो चेंजेस हियर है ना? हाँ ओके, चेंजेस, हाँ डिफॉल्ट ही रखना सब कुछ। ठीक है। हाय अतुल. हेलो। प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट मध्ये युजली युजिंग UI आपण VMs क्रिएट करतो और स्क्रिप्टिंग मोस्टली यूज होतं. स्क्रिप्टिंगच यूज केलं जातं. ओके. पुढे जाऊन आपण स्क्रिप्टिंग थ्रूच ट्राय करेल. आता इकडचं फर्स्ट सेशन आहे ना, तर त्यामुळे अंडरस्टँडिंगला जेव्हा तुमचं युजर इंटरफेस तुम्हाला लक्षात आलं की मग स्क्रिप्टिंग मध्ये तुम्ही फील्ड्स विथ पॅरामीटर अपडेट करू शकता. ओके. त्याच्यासाठी Azure CLI तुम्हाला कॉन्फिगर करावं लागते. पॉवर शेल थ्रू पण तुम्ही कमांड देऊ शकता. AZ लॉग इन अशी कमांड असते आणि त्यानंतर तुम्ही कनेक्ट करता सबस्क्रिप्शन वगैरे सिलेक्ट करून नंबरिंग वगैरे ऍड करावं लागतं आणि त्यानंतर मग तुम्ही स्क्रिप्ट तिथून रन करू शकता. तुमच्या लोकल मशीन थ्रू पण करू शकता आणि इम्प्लिमेंटेशन जे होईल ते तुमच्या Azure पोर्टलमध्ये होईल. किंवा तिथे क्लाउड शेअर पण आहे राईट साईडला वरती. ती कोपायलट लिहिलंय त्याच्या राईट साईडला, ते पण यूज करू शकता. इथे हो. ओके. जेवढे पण प्रॅक्टिस आपण करू त्याचे कोड्स किंवा प्रॅक्टिस मी माझ्या गिटहबला स्टोअर केलेले आहेत. तिथून पण तुम्ही रेफरन्स घेऊ शकता एखाद्या टास्कसाठी. ह्या आयपीने आपल्याला मशीनला कनेक्ट करायचं, करेक्ट? हो. एक सेकंड. हा आयपी आहे. ओके, होम मध्ये या बरं. हा, ऑल रिसोर्सेस मध्ये क्लिक करा बरं ते. ओके सर, हे पण ठीक आहे. और हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. VM ला क्लिक केलं तरी चालेल. क्लिक करा VM वर. हा, आता इथे कनेक्ट ला क्लिक करा वरती. ओके. आता कनेक्ट म्हणा. आता हा RDB डाऊन. ओके. आपण इथून पण करू शकतो का? इथून ब्राउझर थ्रू कनेक्ट करायचं म्हणता का?
नाही नाही आपल्याकडे डिफॉल्ट असतं ना रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हा असतं ना हो. विंडोज मशीन पण सो तिथे तिथूनही करता येतात का? हा, तिथे तुम्हाला पब्लिक आयपी युजर नेम पासवर्ड त्या फील्ड टाकावे लागतील आणि जर इथून अच्छा. सुद्धा डायरेक्ट आरडीपी फाईल डाउनलोड केली तर ती ऑटोमॅटिक फेच होतं, फक्त पासवर्ड टाकावा लागतो. ओके ओके. तर इथे आपल्याला पार्टिशन्स वगैरे करता येतील इफ वी नीड. हा येतात ना, किंवा तुम्हाला डिस्क जर सेपरेट अटॅच करायचे असतील तर ते पण करू शकता. ओके ओके गॉट इट. एकापेक्षा जास्त डिस्क पण अटॅच करू शकता तुम्ही. ओके तोही ऑप्शन आहे. ओके गॉट इट. ऑलराईट. आणि ह्याला जस्ट लॉग आउट करण्यासाठी आपलं स्टँडर्ड वे टू लॉग आउट राईट? हो. नाही, जरी तुम्ही लॉगआउट जरी केलं तरी मशीन रनिंग मध्येच आहे. ते राहणार कंटिन्यू जोपर्यंत तुम्ही टर्मिनेट नाही करत किंवा स्टॉप नाही करत. तसे जे लेफ्ट साईडला जे आहेत ना, हे बाकीचे ऑप्शन्स पण अवेलेबल आहेत. डिझास्टर रिकव्हरी, बॅकअप वगैरे अच्छा. हाय लेवलला करता येईल, किंवा तुम्हाला स्केल करायचं आहे आता या टाईपचे मशीन्स अजून पाहिजेत, हॉरिझॉन्टल स्केलिंग म्हणतात, तर ते तुम्ही करू शकता. ओके VMSS म्हणून एक सेपरेट सर्व्हिस आहे, व्हर्च्युअल मशीन स्केल सेट. तर त्यामध्ये आपण नंबर ऑफ व्हर्च्युअल मशीन्स ग्रुपिंग मध्ये लॉन्च करतो, की जे लोड बॅलन्सरचा पार्ट किंवा ऑटो स्केलिंग ग्रुप म्हणतात त्याला. तुमच्यापैकी कोणी AWS मध्ये प्रॅक्टिस असेल तर ऑटो स्केलिंग ग्रुप मध्ये आपण नंबर ऑफ VMs ऍड करतो, की जे तुम्ही लोड बॅलन्सरला कनेक्ट करू शकता आणि ट्रॅफिक राऊट करू शकता मल्टिपल मशीन्स. ओके 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 गॉट इट. आणि ह्याला जस्ट आपल्याला जर ड्रॉप करायचं आहे तर ऑल रिसोर्सेस हा, किंवा इथून पण सिलेक्ट करून त्याला क्लिक करा एकदा नेमला, नाही शेजारी. सॉरी कुठे? हा, व्हर्च्युअल मशीनच्या नावाला क्लिक करा. अच्छा ओके, आणि इथून तुम्ही स्टॉप किंवा डिलीट करू शकता. ओके. ऍक्च्युली हा जो टॅब होता ना, तो आधी इथेच होता अवेलेबल, पण हे युजर इंटरफेस अपडेट होत राहतो. हा हा हे मागच्या वीक मध्ये अपडेट झाले. ओके ओके ओके. असं पण होऊ शकतं की तुम्ही जे आता प्रॅक्टिस करताय, एक थोडा गॅप पडला, नंतर ट्राय करताय तर चेंज असेल सगळं. आणि नवीन कॉन्फिगरेशन येत राहतात, की जशी रिक्वायरमेंट आहे त्यानुसार ते अपडेट होत जातात, किंवा सर्टिफिकेशन मध्ये पण नवीन कंटेंट कंटिन्युअसली असतात. राईट. मे बी जे तुमच्यापैकी AWS ट्राय करत असतील त्यांच्यामध्ये फ्लीट सेटिंग आली आता व्हर्च्युअल मशीन लॉन्च करता वेळी. तर ते एकाच डेटा सेंटर मधले मल्टिपल कॉन्फिगरेशन सिलेक्ट करून मग ते लॉन्च करतात. भरपूर ऑप्शन्स आहेत. हा हो गया, हा भी दे. ओके. प्लस जे सबस्क्रिप्शन आहे त्याच्यामध्ये डेव्हलपर साठी एक सेपरेट सबस्क्रिप्शन येतं, ज्याच्यामध्ये तुम्ही मायक्रोसॉफ्टचे टूल्स पण इंटिग्रेट करू शकता. Hey, and Atul, Huh. sorry to interrupt, but I would appreciate if you can speak in English because I don't understand what you people are Sorry. saying. Yeah. Sorry about that. In developer subscription also, you can integrate other tools configuration that is also available, and some enterprise subscriptions are also there. So first you can try with free subscription, which is for 1 month. Later on you can upgrade it to pay-as-you-go pricing, and that's it. And in this way you can practice. For pay-as-you-go pricing as well, there are limitations. So you can't launch virtual machines more than 5 in number. Public IPs not more than 5, etc., etc. So what we will try, whatever resources we will launch, we will just terminate it after the use. Later on we will configure it again, or we can create our own scripts as well. We will fire that from machines, local machines, and then it will be deployed in a portal. Costing wise, you can optimize cost. You can terminate resources or stop it. That's it. In this way, you can optimize it. I think monthly 100, 200 rupees, 300 rupees will be costing if you are practicing well.
ओके. नाही यातून जर मला ह्या मध्ये टूल्स हवे असतील तर मग मला माझ्या सबस्क्रिप्शन मध्येच ते टूल्स ऍड करावे लागतात की मी इथून एक्सटर्नली इन्स्टॉल करू शकतो? म्हणजे व्हर्च्युअल मशीनच्या आतमध्ये म्हणता. हा हा हा, त्याच्यासाठी तुम्ही स्क्रिप्टिंग पण देऊ शकता. एक कस्टम डेटा म्हणून टॅब असतो, ओके त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता स्क्रिप्ट वगैरे. एक्सटेन्शनचा टॅब असतो लॉन्च करतानाच, तर तिथे स्क्रिप्ट देऊ शकता, किंवा मग लॉन्च केल्यानंतर पण इन्स्टॉलेशनचा ऑप्शन आहे सर्व्हर मॅनेजर मध्ये. ओके तिथून पण जे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेअर तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता. सो मी माझी लाईक फॉर एक्झाम्पल पॉवर BI किंवा SQL सर्व्हर माझ्याकडे तशी इमेज आहे, सो मी जस्ट ते पेन ड्राईव्ह लावून इथे टाकून इन्स्टॉल तसं नाही होणार आहे? नाही नाही नाही, तसं नाही होत. अच्छा. त्या केसमध्ये जे तुम्ही जे सांगितलं आताचं आर्किटेक्चर, एक कस्टम इमेजेस म्हणून असतं, की आता तुम्ही एक व्हर्च्युअल मशीन बनवलं, तिथे कॉन्फिगरेशन ठेवलं आणि त्याची इमेज बनवली, आणि ती इमेज तुम्ही मग नवीन VMs लॉन्च करण्यासाठी ट्राय करू शकता. ओके ओके गॉट इट. तो एक टैब में आपका Azure पोर्टल साइन इन करना है आपको, portal.azure.com, और वहाँ पे साइन इन पासवर्ड आपको एंटर करने के बाद आपको पोर्टल में Azure VM पे आप अगर क्लिक करते हो तो पूरा टैब दिखना चाहिए. आपका अकाउंट एक्टिवेटेड कंडीशन में चाहिए. एक सेपरेट टैब में पावर शेल भी ओपन कर लेना. आप अगर विंडोज पे हो, अगर लिनक्स पे मैक पे हो तो टर्मिनल ओपन कर सकते. और दैट्स इट. Okay, I'm signing into my account, portal.azure.com. Okay, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको सर्विसेज दिख जाएंगे. ऑल रिसोर्सेज पे क्लिक करके आपको जितने भी रनिंग सर्विसेज है या जो आपने डिप्लॉयमेंट किया वो पूरा विजिबल हो जाएगा. यहाँ पे अभी कल हमने प्रैक्टिस किया था Azure वर्चुअल मशीन लॉन्च करने का, जहाँ पे लिनक्स वाला VM हमने लॉन्च किया था और उसको कनेक्ट भी किया था SSH कनेक्शन से. अभी प्रैक्टिस करेंगे विंडोज वाला VM लॉन्च करेंगे, और वहां पे हमें आज वेब सर्वर ट्राई करना है. सो टुडे वी विल प्रैक्टिस फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज IIS. दिस इज वेब सर्वर. When you want to host any website, you will try for installing, configuring IIS, Internet Information Services, on Windows type of virtual machines. When you're setting up this will be available within a server manager. Server manager, that is Petipeter, जहां पे आपकी पूरी सेटिंग्स रहेंगी वर्चुअल मशीन्स की, विंडोज के केस में, और वहां पे हमें IIS का सेटअप करना है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. जब आप ये इंस्टॉलेशन करते हो वहां पे C ड्राइव में, so within C drive you will get one folder that will be inetpub folder. This will be used for hosting your code, and within that you will have www root folder, and here you can save your web pages. For example, just take an example, index.html. तो जब आप ये कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करते हो, एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी रहती जहां पे आप वेब का पेज होस्ट कर पाओगे. एक रहता डोमेन, एक रहता होस्टिंग, राइट. होस्टिंग में आप कोड स्टोर करके रखते हो, तो यहाँ पे हम लोग होस्टिंग करेंगे, हम होस्ट करेंगे हमारा वेब पेज, दैट्स इट. और इसके लिए हमें चाहिए एक Azure VM जिसकी 4 GB से ज्यादा रैम हो, उसको लॉन्च करेंगे, और RDP कनेक्शन यानी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. तो यहाँ पे हम लोग पोर्ट नंबर यूज करेंगे 3389 बाय डिफॉल्ट जो रहता है, और ये अगर पोर्ट एडेड है इनबाउंड रूल में, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में. Now what is network security group? Within network security group, either you are allowing for traffic or denying for the same. So we will try for allowing traffic, that is on port number 3389, port number 80, that is for HTTP, and for HTTPS, port number 443. So these 3 ports we will add inside the inbound rule of network security group by launching an Azure VM. Now let's try. For this practice, here I'm signing into my Azure portal, searching for virtual machines tab. From here, you can click on create. We are revising the previous steps,
So don't worry about it. Here I have clicked on Azure VM, selecting a subscription. Now what is subscription? Your subscription will be checked first. After that, you will check your resource group. So previously in previous session, we have created a resource group. Now, what is resource group? It's a logical bounding of resources. And these are region specific. So we have selected for region East US, this one. Okay. And I'm naming this machine as Windows. Here we are selecting Windows Server, right? This is not your client machine. If you are selecting for operating system from here, you can manually search as well. Here I'm searching for Windows. So we are having Windows Server 2022, 2025, 2019, 2016. 2016 is absolute now. So you can select for 2019, which is having pricing of $150 per year, or you can select for latest one as well. So I will go with the latest one, Windows Server 2025 Data Center Edition, which is 64-bit generation 2. Here we have selected architecture of 64-bit. This is the size of instance or size of virtual machine. If you are having a requirement for larger infrastructure, you can just maximize type of instance here. So this is D2AD version 6, which will provide me 2 CPU cores, 8 GB RAM. I will select it. That's enough for me. So that's why we are selected this instance. Now we are entering username for this machine. I'm entering my name. In your case, you can enter anything as you wish. And password should be combination of characters, numbers, uppercase, and lowercase. Then you can repeat the password. It will be verified, and you need to remember it here. Now, these settings is regarding allowing the traffic. We will allow RDP connection, that is remote desktop connections. आप कोई मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं रिमोटली विंडोज के केस में, तो आरडीपी प्रोटोकॉल वहां पे यूज में आ जाएगा. अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी है, उस केस में HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल यूज में आ सकता है. तो मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है, इस वजह से मैं HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को क्लिक कर रहा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे हम लोग डिस्क पे जाएंगे. सो हियर आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट टैब, दैट इज डिस्क. This is a default disk as per your instance size configuration. Okay, यहाँ पे it will provide you 127 GB of raw SSD. So we are having premium SSD, standard SSD, HDD as well. If your budget is low or you are in a staging environment, you can select for HDD. Right now, I'm just going with the premium SSD. That's it. Networking. Within networking, we are having a virtual network. Later on, we will learn about the virtual network, subnet, etc., etc. You can keep it default, and within this tab, this network should be automatically created. If that's not happening, you can click on create new tab and your network should be created. That's the case. Because for every machine, when we are connecting via internet, network is there. First of all, entry will be into network and then into machine. That's the case. So public IP, which is required when you are connecting any machine from an internet, public IP is necessary. So we will create one public IP automatically here. Or if this tab is not visible in your case, you can click on create new and just click on OK via entering some fields over here. That's it. And we will launch a virtual machine. So this is the final price, that is 0.2060 USD per hour. Clicking on create. So one key pair will be also there, which will be downloaded in your downloads folder. That's actually on a EC2 AWS. In case of Windows, Azure VM on a Azure portal, it will only ask for the username and password for connection level. So no key pair will be there.
In case of AWS, actually for EC2 Windows type of instances, you need to encrypt the password. Over there, .pm key pair is being used. But in case of Microsoft Azure, you will just simply enter username and password. That will work. Here I'm clicking on home folder, clicking on virtual machine tab, and at the right hand side you can see a status which is creating. Once it will be in the running state, you can try for connecting it. So you need to wait for a few seconds more and it will be in a running state. Then you can click on connect. Here is option that is native RDP. What is native RDP? Native remote desktop protocol. Here. So you can connect from your local machine to this virtual machine. You can click on connect via RDP. So here is a port which will be validated. If you want to check whether the port has been added and which is available for connection or not, this VM is available for connection or not, you can check for the access from here. This is our virtual machine. So you will get a green signal that network security group is allowing for port number 3389 from a resource IP. Okay, later on we will cross check for network security group as well, but let's check for RDP connection first. So I'm opening this RDP file. In case of Windows remote desktop tool, which is pre-installed in your operating system, you can use that one. Here you can enter your username and password. I'm entering my password. Clicking on continue. And my remote desktop connection is successful now. So this will be your fresh machine. It will take few seconds more for showing user interface. And speed of this virtual machine access will be depending upon configurations that you are selecting. If you are selecting lower RAM, this may be a challenging. If you are selecting a great RAM configuration, it will work perfectly. So here we are into server manager. By default, when you are signing into this Azure VM, the tabs will be open. Automatic tabs will be open of server manager. Server manager will have all the settings for this server. Now we need to try for installing IIS, that is Internet Information Services. That's a web server package. You can click on add roles and features from here. Then you can click on next, next, next. And at the last third option, you can see a web server IIS. Okay, that's just a package. That's just a software that you will try for installing it. Here I'm clicking on next and install. So make sure that you are selecting IIS option from add rules, from add packages, add rules and features actually. Okay, so this will install this software automatically, and then you can click on close button. If you are closing this button, it will also work for you. It will install everything in the background, and within C drive, here I'm opening File Explorer. Within the C drive, you will get a directory for web server, that is iNetwork folder, this one. And here www root folder will be there in few seconds, and over there you can keep a website page. Now what I will try for copying public IP of this Azure VM. So I will go with the overview tab, and here is a public IP. Okay, I'm just copying this, and in a web browser I will try for http:// and public IP of virtual machine. So this type of web page will be visible. Okay,
And we will replace this web page and we will host our one basic static web page with this, and that will be visible soon. But before that, let's create a script for it. So I'm just adding header one. I'm naming this as my Azure VM web server. And I'm completing this header one. Okay, that's a simple syntax. We will try it. And we will save this code as an index.html in a directory that is inetpub www root and index.html. Page will be there. So I'm just copying this. And within my remote desktop connection, I'm selecting this inetpub folder, www root folder, and let's create a index.html page. I'm opening a notepad here. Notepad. Pasting this code. Going through file, save as. Within desktop, this PC, C drive, inetpub, www root, and here I will save this page as index.html and save as type. I'm selecting all files. Okay, you need to remember this. Index.html will be file name and save as type will be all files. Save it. That's it. I'm going out of this RDP connection again, and I'm refreshing this page now. So you will get your website hosted. Okay. So this is the practice that you need to try now. You will share your screen. I'm providing you steps one by one. Okay. First step, just write it. First step that we will try for searching VM, Azure VM in your Azure portal. Second step, you can name a VM. In my case, I have named it as a Windows. Third step, we need to select instance type, or you can say VM type. So at least 4 GB RAM is necessary. So cross check for any type of instance and make sure that it has at least 4 GB RAM configuration. Fourth step, you can define a password for this machine. So create a password and username. These are necessary for connection level. Username and password. Fifth step, after creating username and password, you can check for VNet configuration, virtual network. Make it as default. Okay. And sixth, you should have a public IP. That should be a default as well. Okay. And if default settings are not visible, in that case only you can click on create new button. And last one, create VM. Eighth step, after creating an VM, when it's in a running state, then only you can connect to it. So after this VM, which will be in running state, you can click on connect tab. After clicking on connect, you can download RDP file. Open this file. After opening this file, you need to enter username and password. One more thing, you need to configure network security group. I'm adding 7th step, network security group. Here you need to add RDP, HTTP, and HTTPS rules. 11th step. After adding username and password, when your connection is successful, you need to go through server manager over there. Within server manager, add roles and features. After adding roles and features, we will try for next and install. Next. You can select for IIS over there and then install.
After installing, you need to create one index.html page. You need to create index.html page. And you can save this code into index.html page. And you need to save this as a inside C drive. Inside C drive, you will have inetpub folder. Inetpub folder. Within that, www root is the folder. And within that, you can save index.html page. Then you can go out of RDP connection. And then you can paste public IP of this instance, public IP of this VM, Azure VM, into web browser, your web browser. So you can have http:// then public IP of VM in a web browser. That's it. And page will be visible to you. At last, after this practice, you can delete a VM, or you can directly go for all resources tab, select everything and delete it. You can check for all resources tab. तो जो भी प्रैक्टिस करोगे आप, क्या करना है, पोर्टल में जितने भी फील्ड से रीड करते जाना है, ठीक है, और डिलीट करते वक्त ऑल रिसोर्सेज टैब प्राइमरी प्रैक्टिस में चेक करना है. तो ये सारे स्टेप्स मैं ग्रुप पे पेस्ट कर रहा, चैट में भी डाल रहा. दिस प्रैक्टिस इज फॉर Azure VM वेब सर्वर, दैट इज IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. यहाँ पे ट्रिपल शूटिंग का पार्ट में बताता क्या रहता है. तो ये सारे स्टेप्स पहले मैं कॉपी कर रहा, ग्रुप पे पेस्ट कर रहा और चैट में भी पेस्ट कर रहा. चैट में खाली स्क्रिप्ट पेस्ट करता मैं, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा पूरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट नहीं होगा. 972 14 तक हो गया कॉपी. 14 ओके. अभी यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पार्ट समझ लो कि जब आपको ये वेबसाइट नहीं दिख रही है, उस केस में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रॉस चेक करना है. तो ये भी लेफ्ट साइड में नेटवर्क सेटिंग है. तो जितने भी रूल्स आप ऐड करोगे वो सिक्योरिटी ग्रुप पे यहाँ पे दिख जाएंगे. ये सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहता है, ये ट्रैफिक को अलाउ कर रहा है. जहां पे आपको आरडीपी वाला प्रोटोकॉल दिख रहा 3389. अभी समझो मैंने ये वाला रूल अगर डिलीट मार दिया तो यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है मेरा, वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा. या रूल नहीं है तो कनेक्शन ही नहीं होगा. ठीक है, वो भी मैं दिखाता. अभी यहाँ पे मैं गया नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में और इसको एडिट मार देते हैं. अभी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिखा रहा यार, इन्होंने अपडेट कर दिया लगता है. चलिए इसको मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग. यहाँ पे मैंने मॉडिफाई कर लिया, एक स्पेसिफिक आईपी से ही कनेक्शन अलाउ कर देते हैं. तो जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो वाला चला जाएगा. मैं रैंडमली डाला कोई भी आईपी.
से बोल रहा हूं, ठीक है, ये अपडेट कर दिया। अब फिर से मैं आपको आरडीपी कनेक्शन के लिए ट्राई करके दिखा रहा। यहाँ पे मैंने ट्राई किया आरडीपी कनेक्शन के लिए, तो ये अभी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में जो भी रूल्स आप अप्लाई करोगे वो मशीन के लिए अप्लाई हो जाएंगे। तो जब भी कोई नेटवर्क से कनेक्शन आ रहा है वो पहले नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को जाएगा, फिर वीएम को जाएगा। इसको मैं फिर से अपडेट कर लेता। यहाँ पे मैंने सोर्स आईपी डाला था, ठीक है। अगर समझो मुझे पूरे आईपी को अलाउ करना है, उस केस में 0.0.0.0/0 भी आप डाल सकते, ये सारे आईपी को अलाउ कर देगा। या आप खुद का आईपी भी डाल सकते हैं, पब्लिक आईपी जो भी रहेगा, तो आपके आईपी से ही ये अलाउ भी कर सकता है। अभी मैंने यहाँ पे 0.00 डाल दिया और सेव बोल दिया। अभी फिर से मैं आरडीपी कनेक्शन लिए ट्राई करता। ये मैंने आरडीपी फाइल ओपन कर दी, तो यहाँ पे अभी ये पूछ रहा, फिर से मैंने पासवर्ड डाल दिया, एक्सेप्ट किया, कंटिन्यू किया, ठीक है, कनेक्शन हो गया। अभी ट्राई करते इस दो प्रोटोकॉल के लिए, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ठीक है। इसको सेटिंग में गया मैं, ठीक है। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, एक्चुअली उन्होंने थोड़ा टैब अपडेट कर दिया, ये हमेशा अपडेट होता रहता पोर्टल वगैरह। तो यहाँ पे सेटिंग में अभी इनबाउंड रूल्स दिख रहे हैं, वहां पे एचटीटीपी वाला रूल है, एचटीटीपीएस वाला है, इसको पढ़ लेना। यहाँ पे प्रायोरिटी है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली जो लीस्ट प्रायोरिटी रहती है वो पहले हो जाता। जैसे आरडीपी वाला प्रोटोकॉल का प्रायोरिटी दिया है 300, मतलब ये पहले इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसके बाद ये एचटीटीपी वाला, फिर एचटीटीपीएस वाला, ये बाकी दो रूल्स भी अलाउड है वहां पे। तो प्रायोरिटी 320 है, पोर्ट नंबर 80 है, टीसीपी प्रोटोकॉल है, सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी अलाउ किया है। 340 एचटीटीपीएस, 443 प्रोटोकॉल है, टीसीपी एनी एनी अलाउ किया है। इसको डिलीट मार देता मैं। अभी मैंने क्या किया, वीएम मेरे पास है जहां पे मैंने वेबसाइट का कंटेंट रखा है, लेकिन मैंने ये दो सिक्योरिटी ग्रुप से वो डिलीट मार दिया। तो यही पे मैं रिफ्रेश मार रहा अभी, देखो न्यू टैब में ओपन करता है एक्चुअली, क्योंकि अभी कैश मेमोरी रहेगी वहां पे, तो कुछ भी वेबसाइट आपको दिखेगी नहीं। तो इन केस समझो आपने Azure VM लॉन्च कर दिया, वहां पे वेब सर्वर भी आपने रनिंग में रखा, लेकिन वेब पेज नहीं दिख रहा, तो ट्रबल शूटिंग के लिए आपको क्रॉस चेक करना है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अभी फिर से रूल ऐड कर देते हैं, यही पे जाते हैं ऐड में, यहाँ पे सोर्स एनी रखा मैंने, डेस्टिनेशन भी एनी है, कस्टम में यहाँ पे एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपको दिख जाएगा। वैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आपकी यूज केस के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करोगे। तो यहाँ पे एचटीटीपी से लेके आया मैंने, पोर्ट नंबर डिफॉल्ट 80 दिख रहा है, ठीक है, और प्रायोरिटी भी यहाँ पे दिख जाएगी। प्रायोरिटी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी कम रहेगी वो पहले रन हो जाएगा। तो यहाँ पे अलो एचटीटीपी प्रोटोकॉल ऐड बोल दिया मैंने। अभी मैंने कौन सा पोर्ट ऐड कर दिया, एचटीटीपी वाला, यानी मैं अगर यहाँ पे http:// पब्लिक आईपी डाल देता हूं तो वेब पेज वैसे के वैसे दिख जाएगा, ठीक है। आगे वेब पेज, एचटीटीपीएस भी ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर आपको एचटीटीपीएस के लिए क्रॉस चेक करना है, आपको स्टार्टिंग में क्या डालना पड़ेगा, https:// और इसका पब्लिक आईपी। तो अभी विजिबल नहीं है एचटीटीपीएस वाला पेज, ठीक है। अभी एचटीटीपीएस वाला ऐड कर देते हैं। तो यही पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, और सर्विसेज में मैंने एचटीटीपीएस ले लिया। 443 प्रोटोकॉल आपको दिख रहा, डिफॉल्ट पोर्ट है, और प्रायोरिटी 320 एडेड है। तो एचटीटीपीएस वाला भी यहीं पे रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते वक्त सारे फील्ड्स क्रॉस चेक करने हैं, एडिट करके ट्राई करना है, ठीक है, और इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है हमें। और एक ट्रबल शूटिंग पार्ट रह सकता है, जैसे ये वर्चुअल मशीन अभी आपको एक्सेस हो रहा, सारे वेब पेज वगैरह दिख रहे, लेकिन समझो कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, उसकी सर्विस ही रनिंग में नहीं है, तो आपको थोड़ी ना वेब पेज देखेगा। तो वो भी क्रॉस चेक करना है आपको। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, आप जाएंगे आपके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में, तो जैसे समझो मैंने IIS सर्वर इंस्टॉल किया है, मतलब सी ड्राइव में उसका
फोल्डर दिखना चाहिए। तो ये फोल्डर भी क्रॉस चेक कर लेना वेदर दिस इज प्रेजेंट और नॉट। और यहाँ पे जो भी वेब पेज आप ऐड करोगे, एक ट्रबल शूटिंग के बाद वो भी रह सकता है कि आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट में, एचटीएमएल फॉर्मेट में वो दिखना चाहिए। तो टाइप में यहाँ पे आपको एचटीएमएल दिखना चाहिए। समझो आपने टेक्स्ट फाइल वहां पे रख दी, नहीं दिखेगा कुछ। ओके, ये वाला पेज आप डिलीट भी मार सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी बोल सकते हैं, या इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं आप आपके हिसाब से। या समझो आपके पास कोई वेबसाइट का कोड पहले से प्रेजेंट है, वो भी आप यहाँ पे होस्ट करके ट्राई कीजिए। जो डेवलपर्स वगैरह है आप में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं इस प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं डिलीशन दिखा रहा, डिलीशन इजी है वैसे तो। या तो आप वीएम में जाओ, यहाँ पे वीएम सिलेक्ट करो और डिलीट बोल दो, तो वीएम और उसकी डिपेंडेंसी चली जाएगी। पूरी डिपेंडेंसीज नहीं जाएगी, जो डिपेंडेंसी सेट करते वक्त थी, जैसे कि एक हार्ड डिस्क अटैच रहती वीएम के साथ, तो वो डिलीट हो जाएगा। एक आईपी अटैच्ड है आपके मशीन के साथ, वो चला जाएगा। ये सारी सेटिंग चली जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज टैब में जाते हो, तो आपको दिख जाएगा कि एक वीएम के साथ साथ कितने सारी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिल रही, जैसे डिस्क मिल रही है, राइट। तो जैसे हम लोग एक कोई मशीन बाय करते हैं, वैसे डिस्क भी उसके साथ रहेगी ना, वही है। देन नेटवर्क इंटरफेस, ये रहता कार्ड, एनआईसी कार्ड बोलते हैं इसको, नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड। जब भी आप डेटा सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस केस में रैक से वो कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट हो रहा, यानी वहां पे नेटवर्किंग के डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वहां से नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ये रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई मशीन को, वीएम को हम लोग स्टॉप करते फिर से रिस्टार्ट कर देते, तो उसका पब्लिक आईपी चेंज हो जाता, क्योंकि नया नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड वहां पे सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इंटरव्यूज में ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हेन यू आर स्टॉपिंग एनी वीएम एंड रिस्टार्टिंग अगेन, योर आईपी एड्रेस इज बीइंग चेंज्ड, व्हाई? So you should answer that the network interfacing card is detached in that case, and new network interfacing card will be attached. That's why we are getting new IP. The network security group, ये acting, this one is acting as a firewall, जो हमने अभी देखा। नेटवर्क वॉचर, ये मॉनिटरिंग वाली सर्विस है। पब्लिक आईपी आपको एक मिल रहा है, वो वर्चुअल मशीन के डिटेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। लास्ट में जो आपको दिख रहा है दैट इज वीनेट, ये रहता है वर्चुअल नेटवर्क। अगर नेटवर्क है तो ही नेटवर्क के अंदर आप कुछ कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। तो बाय सिनारियो जब हम लोग वीएम बनाते हैं, पहले नेटवर्क क्रिएट होगा, नेटवर्क के बाद सबनेट क्रिएट होगा। आगे जाके हम लोग ये दोनों चीजें सीखेंगे, सबनेट क्या रहता, नेटवर्क क्या रहता। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, वीएम को लॉन्च करके कनेक्ट करना है और वहां पे वेबसाइट होस्ट करनी है। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना। अभी मैं डिलीशन दिखा रहा, या तो पूरा सिलेक्ट कर लो, डिलीट मार दो, और यहाँ पे फोर्स डिलीट का ऑप्शन भी दिया है, टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए आप डायरेक्टली फोर्स डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, जितने लोग अकाउंट जिनका एक्टिवेट है वो स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना सब लोग। मैं स्टॉप कर रहा स्क्रीन। स्टेप्स मैंने ग्रुप पे डाले हैं, चैट में भी डाले हैं, वहां से रेफरेंस लेना है आपको। और कुछ चैलेंजेस आते हैं अभी बताना है, अभी सॉल्व करेंगे। Yeah, so I've already started with this. ओके, I have one question over here. The zone, do we have to select one or it's three? यू कैन सिलेक्ट फॉर एनी जोन। जोन क्या रहता कि एक ग्रुपिंग ऑफ डेटा सेंटर रहता, राइट। तो ये जोन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते। जैसे जैसे यहाँ पे अभी आपने इथन्स में एडमिशन लिया, इथन्स की वाकड़ ब्रांच है, इथन्स का शिवाजी नगर का समझो एक ब्रांच है, तो कम्युनिकेशन रहेगा ना उनका। वैसे नेटवर्क लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते। समझो कोई एक जोन खराब हो गया, उसका मेंटेनेंस चल रहा समझो, तो यूजर को फिर भी एक्सेसिबल रहना चाहिए, तो ये रेप्लिकेशन करके देता है आपको। समझो आप जोन 1, जोन 2, जोन 3 सिलेक्ट कर लेते हो, तो एक्चुअल में ये 3 वीएम्स बनाता बैकग्राउंड में, एक आपके पास रहता है, एक दो उसकी कॉपीज रहती है। ठीक है, तो एक जोन इनफ है अभी प्रैक्टिस के वक्त, लेकिन प्रोडक्शन में काम करते वक्त आप मल्टीपल जोन्स के साथ काम करोगे। Okay. This I've selected. ओके, Standard.
अभी हमारा जो अकाउंट है वो प्रैक्टिस अकाउंट है, ठीक है, बेसिक अकाउंट फ्री टायर में रहेगा या पे एज यू गो में भी रहेगा, लेकिन उसको लिमिटेशंस है। राइट। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे हाई लेवल के लेते हो और आपको परमिशन नहीं है तो वो लॉन्च नहीं होगा। ओके ओके। So select RDP. हाँ यस, HTTP और HTTPS भी सिलेक्ट कर दीजिए। डिस्क पे जाना, बाकी ऑप्शंस भी रीड कर दे जाना आप। यहाँ पे 127 GB आपको डिस्क मिल रही है, SSD है, प्रीमियम SSD, और वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा ये डिलीट विद VM, यानी VM डिलीट करते वक्त डिस्क भी डिलीट हो जाएगी। हमको भी 4-5 बार कॉल करी। Yeah. नहीं वो तो बात करी ना, से बात करी, हमको कॉल करी तो कॉल करी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लिक करो। Yeah, sorry. Key. Okay, next networking. ये है नेटवर्किंग। ऑटोमेटिक आ रहा है सब कुछ, राइट। नेक्स्ट एडवांस, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे एडवांस में एक्सटेंशंस दिया है, तो अगर स्क्रिप्टिंग वगैरह स्टार्ट ट्राई करनी है, यानी VM लॉन्च के साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपको इंस्टॉल करने हैं, उस केस में ये एक्सटेंशंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। Okay. इस हमारी आगे बढ़ जाएंगी तो हम उसके साथ भी काम कर लेंगे। Okay. We will not change anything else, right? Right, prevent create. Here nothing we have to select. हाँ, nothing. वहाँ पे आपको अभी वार्निंग दिखा था कि यू आर सेट फॉर RDP कनेक्शन ओपन फॉर ऑल फ्रॉम ऑल IPs। ये रिकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन लेवल पे, यानी जब आप प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे तो आप स्पेसिफिक IP से ही कनेक्शन अलाउ कर दोगे VM को। Okay. ठीक है, क्रिएट। इसमें IP रेंज का स्पेसिफिक होगा या फिर स्पेसिफिक IP होगा? दोनों दे सकते हैं हम लोग, रेंज भी दे सकते हैं और IP भी दे सकते हैं। और प्रोडक्शन लेवल पे अतुल सर स्टैटिक आईपी यूज करते हैं VM के लिए? हाँ, एक सेपरेटली स्टैटिक IP हम अटैच भी कर सकते हैं। ओके। जैसे हमने वहाँ पे IP टैब दिखा था लॉन्च करते वक्त, वैसे सेपरेटली भी IPs क्रिएट करके रख सकते हैं हम लोग। तो समझो आपके पास एक स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, बाद में सेम IP आपको कंटिन्यू करना है,
तो वो सेपरेटली रखो आप, और उसको डिटैच करके वीएम से फिर बाद में दूसरे वीएम को अटैच कर सकते हैं आप। जैसे कि हमारे पास वीलैन की स्पेसिफिक रेंज होगी आईपी की, तो उस रेंज में जो भी आईपी रिजर्व रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसको रिजर्व कर सकते हैं, राइट? हाँ राइट। AWS के केस में भी इलास्टिक आईपी करके ऑप्शन रहता, ईसी तो कर सकते हैं, वो भी सेम बिहेव कर। अतुल, मुझे नेटवर्किंग पार्ट में थोड़ा असिस्टेंट चाहिए, मैं शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ चलेगा। इज इट विजिबल? हाँ विजिबल है। यहाँ पे क्या हुआ, वो ऑटो फेच नहीं हुआ, आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। अच्छा, और यहाँ पे नाम देना पड़ेगा? हाँ नाम देना पड़ेगा आपको, माई वीनेट करके आप दे सकते हैं। माय बीनेट, एंड ये सिर्फ डिफॉल्ट चूज कर लूं? हाँ डिफॉल्ट, राइट। दैट्स ओके ओके, जस्ट नेक्स्ट। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, राइट? चेंजेस नहीं, लेकिन ये रीड करते जाओ आप हाँ हाँ। वन बाय वन। Just fine. यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है टैग्स में। ऑलराइट, अच्छा, गॉट इट। यहाँ पे लॉन्च करने से पहले वो अपने कोड्स अलाउ किए क्या, वो भी क्रॉस चेक कर लेना बेसिक में। हाँ नीचे। मैंने हाँ, मैंने कर दिए हैं ये। ओके ठीक। Atul, do we have to download this now? Once deployment is complete? हाँ यस, RDP फाइल डाउनलोड करनी है। Once you're clicking on connect option, download RDP, native RDP option will be visible to you. You can click on it. स्क्रीन शेयर ही रखना, कोई भी एक स्टूडेंट। अच्छा, मैं करता हूँ मेरे। ओके, अभी आगे जाके हम लोग लोड बैलेंसर भी एक सेशंस में देखेंगे। तो उस केस में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होता है मल्टीपल मशीन्स के साथ, तो ये वाली प्रैक्टिस वहां पे आपको यूज में भी आ जाएगी। ओके, जहाँ पे मल्टीपल मशीन आप रखोगे और उसको ट्रैफिक राउट करोगे, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती, कोई रिजल्ट वगैरह वो डिक्लेयर कर देते, तो ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से सर्वर डाउन हो जाता। उसका सोल्यूशन रहता है आप लोड बैलेंस करो मल्टीपल वीएम्स के साथ। ओके ओके, हाँ, गो टू रिसोर्स।
हो वीस करा साईड मला ना हो मी करतो. हे आपण joining कसं करतो आपण ह्याला ग्रुपला लिंक असेल, नाही तर डायरेक्टली तुमच्या गुगल मीटला असेल बघा. meet.google.com टाका. इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, ये फ्रेश मशीन है इस वजह से. Okay. Atul, can I share my screen? हाँ, yes, you can share. Uh, यहाँ पे देखो अभी पब्लिक आईपी एडेड है आपका, ओके, और Yeah. पोर्ट 3389 पे एडेड है. खाली आपको चेक भी कर सकते हैं आप कि एक्सेस है नहीं है. ठीक है, नीचे चेक एक्सेस पे क्लिक कर दीजिएगा तो एक ग्रीन टिक आ जाएगा. और हर एक मशीन को पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है. जैसे आप समझो एक ही नेटवर्क के अंदर हो तो आप प्राइवेट कनेक्शन भी कर सकते हैं. अभी यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी दिख रहा है 10.0.0 नीचे, उस पर क्लिक कर दे. Yeah. हाँ, अगर आप समझो इस वीनेट में हो तभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं प्राइवेटली. ठीक है, डायग्रामेटिकली भी मैं इसको एक्सप्लेन करता. अभी फिलहाल पब्लिक के ही लेना है आपको. हाँ, यहाँ पे डाउनलोड आरडीपी फाइल. ऑफलाईन ऑफ केले म्हणून मला लिंक आली आपल्याला नाही स्कॅन आहे. लिंक नाही मारणार. तुम्ही मीटिंग लिंक आहे ना, ग्रुपला टाक. ग्रुपमध्ये आहात ना, तिथेच 972 इथून क्लिक करून द्या. Atul, step 13 जो है, create index.html, that has to be created on local or on virtual machine? In VM. In VM, okay. This is opening in the text format. Just check for that file. Within your file manager, go with your file manager in your my computer. Then click on downloads folder. एक काम करना, आई थिंक आपने एक टैब भी थोड़ा स्क्रीन शेयर किया है आपने. Yes, only window I'm sharing. एक काम करना, इसको आप एंटायर स्क्रीन शेयर मारना. Okay. थर्ड टैब रहेगा एंटायर.
Yeah, so in downloads, this is the file. ओके, उसको राइट क्लिक कर दीजिए आप। Sorry. नहीं नहीं, राइट क्लिक मारना। Hmm. एक second, हो रहा है राइट क्लिक। फाइल मैनेजर में जाके करना। ये आप आई थिंक ब्राउजर में ही है ना ये। सेकेंड, ठीक है, एक काम करना, वहां पे सर्च में रिमोट डेस्कटॉप सर्च कर सकते हैं आप। आपके In the OS files array. Okay. आपके ओएस में ऑपरेटिंग सिस्टम में। Okay. ये आपका टैब है क्या? Yeah, different tabs. ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लो, ब्राउजर को मिनिमाइज कर लो आप, पूरा ब्राउजर। हाँ ठीक है, वहां पे सर्च ऑप्शन है, सर्च में रिमोट डेस्कटॉप सर्च करना, नहीं तो आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा वो। हाँ, RD रिमोट डेस्कटॉप सर्च करना, रिमोट डेस्कटॉप। आई थिंक टूल नहीं है आपके पास, ठीक है। वहां पे प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर नहीं सेटिंग में आ गए आप, इसको क्लोज कर दो। हाँ, नीचे नीचे शेयर के साइड में प्ले स्टोर है आपका ऐप का। हाँ, वहां पे आप सर्च कर दीजिए रिमोट डेस्कटॉप। सर्च में रिमोट डेस्कटॉप। हाँ, हमारी सर्च। ठीक है, एक सेकेंड ना, इसमें से ये हाँ ऊपर वाला ले सकते हैं आप, क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। हाँ, इंस्टॉल बोल देना। अभी जो 3 फील्ड्स है ना कि यूजर नेम, पब्लिक आईपी और पासवर्ड, ये आप एंटर करके इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओपन बोल देना इस पे। ओपन इन, एक सेकेंड, वेब ब्राउजर चल जाएगा, ठीक है। ओके, एक्सेस कंप्यूटर बोल देना। अरे यार, ये बहुत सारी सेटिंग्स है यहाँ पे। गो टू कंप्यूटर दैट यू वांट टू। कि ये क्रोम वाला हो, एक सेकेंड ना। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार चेक करना, कौन सी अबाउट में जाकर उसको स्पेसिफिक
रिमोट डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। आई थिंक ये क्रोम ओएस है इनकी शायद। Yeah, it's Chrome. ओके, क्रोम ओएस के लिए देखना पड़ेगा कौन सा सेटअप है। ओएस आर्टिकल 2। Atul, meantime, if you are not looking in this issue, I need your help. Okay, you can ping me on LinkedIn. I will paste the link of it. Okay, I think ये रिमोट डेस्कटॉप है माइक्रोसॉफ्ट से। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए। चैट में पेस्ट कर रहा हूँ। Okay. यस, अतुल मैं शेयर करूं? हाँ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने तो ये बना लिया मेरा वेब पेज। Okay. एंड पब्लिक आईपी कॉपी करने के बाद मैं डाल रहा हूँ, बट इट्स नॉट। हाँ, तो वहां पे एक काम कीजिए, स्टार्टिंग में HTTPS लिखा है ना, वहां से यस हटा दीजिए। अच्छा, ठीक है। HTTP आई थिंक वो स्लैश स्लैश है ना, गलत हुआ। अच्छा, ओह अच्छा, आ गया, सॉरी, आ गया। इट्स वर्किंग, थैंक यू, दैट वाज ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया विंडोज का वेब सर्वर। अभी ट्राई करेंगे लिनक्स के लिए वेब सर्वर लॉन्च करने के लिए या हमारा वेब पेज होस्ट करने के लिए। और इसके लिए हमें चाहिए एक लिनक्स वाला मशीन। सो नाउ वी विल ट्राई फॉर लॉन्चिंग एन लिनक्स वर्चुअल मशीन। So I'm clicking on Home, Virtual Machines tab, clicking on Create, Azure VM. Steps will be same, operating system will be different only. Okay, so here selecting resource group, I'm just naming this machine as a Linux. Region will be same. Okay, you can select for any region, no worries. Selecting for image. Now within selecting an image, you can select for Ubuntu server 24.04 LTS. Okay, this is recommended. And size of instance, you can keep anything, as this is a Linux machine, so it will be fast for 4 GB as well, 2 GB as well. You can go through, see all sizes and minimize it. Right now I'm just selecting a default one. 8 GB RAM configuration I have selected. Username, I'm keeping this username as my name, and we will create a key pair. Now this key pair will be used for authentication. Okay, अगर आपके पास एक की पेयर है प्रेजेंट, आपके लोकल मशीन पे है, तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे। दैट्स इट। और की पेयर का नाम डालना जरूरी है यहाँ पे, तो मैंने की पेयर का नाम डाला की। ये .pm एक्सटेंशन के साथ आपको डाउनलोड करके मिलेगा। दो टाइप की पेयर रहता है, एडवांस में बता रहा मैं। एक .ppk रहता और एक .pm रहता। जब भी आप कोई विंडोज मशीन से कनेक्ट करना चाहते हो, आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम समझो विंडोज है, और आप पट्टी करके एक टूल आता, पुट्टी भी बोलते हैं उसको, ये रिमोट कनेक्शंस के लिए रहता। उस केस में आप .ppk यूज करोगे, या .pm है आपके पास और उसको कन्वर्ट किया .ppk में तो भी चलेगा। और टर्मिनल से अगर कनेक्ट करते हो, जैसे पावर शेल से या टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, तो उस केस में .pm चल जाता। तो दो फॉर्मेट है, एक तो .pm यूज कर सकते हैं या .ppk यूज कर सकते हैं। अभी जो डिफॉल्ट डाउनलोड हो जाएगी वो .pm रहेगी। तो यहाँ पे मैंने की पेयर का नाम डाल दिया की, तो ये की.pm लास्ट में डाउनलोड कर देगा। अभी यहाँ पे मैंने ट्रैफिक अलो कर दिया, सो HTTP, HTTPS और SSH ट्रैफिक मैंने अलो बोल दिया। डिस सेटिंग में यहाँ पे डिस सेटिंग डिफॉल्ट आ जाएगी। दैट्स इट। नेटवर्किंग में VNet दिखना चाहिए,
तो आपका जो पहले वाला वीनेट था वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते, खाली नेटवर्क अगर रहेगा आपके पास प्रेजेंट तो, नहीं तो यहाँ पे अगर कुछ दिख नहीं रहा तो आप क्रिएट न्यू बोल पाएंगे, और पब्लिक आईपी इनेबल्ड है, दैट्स इट। बाकी सेटिंग एज इट इज, रिव्यू एंड क्रिएट। So clicking on create, downloading this key pair, and this key pair will be in your downloads folder automatically. You can cross check it. Key.pl. So in this way, we have launched Linux virtual machine. चार्ट पूर्ण फक्त मला मोबाईल मध्ये दिसत आहे, पण इथं कसं व्हेरीफाय चेक करायचं? आणि मला इथं काहीच ओपन होत नाही. मला Google आय थिंक तुम्हाला ना तो कोड लागेल क्लास प्लसचा, classplus.com ला जाऊन आहे ना, तिथे लॉग इन करावं लागेल. तिथे मे बी तुमच्या ग्रुपला आयडी असेल एक क्लासरूमचा काहीतरी, तो ऍड करावा लागेल मे बी. क्लास झाला ह्याची करून घेतो. हा, ते नौशाद कडून करून घ्या तुम्ही. हा, कारण की ते मग इथं तुम्ही जे पेज ते मला मोबाईलला ऍपवर दिसतंय मला, पण ते VP दिसत नाही मला. हा. सिस्टमवर नाही होत. Okay, now we can click on go to resource, and here we are selecting for connect button. अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है नेटिव SSH यानी सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, पोर्ट 22 पे रन होता है. So you can click on connect via SSH from here. This will be your public IP. Public IP is 20.102.99.1555 in my case. Port number जो यूज हो रहा है वो that is 22. और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में SSH वाला रूल एडेड है, तो ही आप कनेक्ट कर पाओगे. जैसे लास्ट टाइम विंडोज में आपको 3389 RDP रूल चाहिए था, वैसे यहाँ पे लिनक्स के केस में 22 SSH पोर्ट नंबर चाहिए. और ये लास्ट में आपको ये कमांड दिख जाएगी, इसको मॉडिफाई करना है, इसको कॉपी भी कर सकते हैं आप और फिर नोट डाउन कर सकते हैं. तो मैं यहीं पे उसको मॉडिफाई कर लेता. मेरे केस में की पेयर का नाम जो है दैट इज key.pl. So here I'm just modifying this. यहाँ पे कमांड आ गई key.pl SSH स्पेस -i. -i रहता आइडेंटिटी के लिए. की पेयर का नाम है key.pl. यूजर नेम मेरा है ATUL. एट के बाद पब्लिक आईपी. समझो आपको प्राइवेटली कनेक्ट करना है किसी मशीन के साथ, तो यहाँ पे प्राइवेट आईपी आ जाएगा उसका, लेकिन आप उस नेटवर्क में चाहिए तभी आप कनेक्शन कर पाओगे. अभी इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो पब्लिक आईपी यहाँ पे रह जाएगा. सो SSH-i key.pl यूजर नेम @. ये कहां से फायर करने, ये कमांड जहां पे आपका key.pl प्रेजेंट है. ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे key.pl है, इसको मैंने ओपन कर लिया, तो ये मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में. तो टर्मिनल से यानी आपके पावर शेल से आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा. दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे कल के cd कमांड्स यूज कर लो, cd स्पेस डाउनलोड्स में चला गया डाउनलोड्स में. लेकिन क्या रहता, हर एक का फाइल स्ट्रक्चर या आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जहां पे भी आपकी फाइल है यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल बोल दे. अभी ये जो कमांड है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ. आई एम जस्ट कॉपिंग दिस कमांड एंड पेस्टिंग इट टर्मिनल डाउनलोड से. सो इट विल आस्क वेदर यू वांट टू कंटिन्यू. से यस. कनेक्शन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, से यस. फिर भी आपको एरर आ जाएगा बैड परमिशन वाला. क्या दिख रहा, ये जो फाइल है ना key.pl, इसकी बैड परमिशन है. यूजर को, जो एग्जिस्टिंग यूजर है आपका, जो अभी डिफॉल्ट यूजर है मशीन को, उसको तो परमिशन चाहिए रीड करने की. हाँ, तो रीड परमिशन हमें ऐड करनी पड़ेगी. तो मैंने कल भी ये प्रैक्टिस दिखाया था आपको. chmod 400 यानी रीड परमिशन फर्स्ट यूजर लेवल पे, और की पेयर का नाम क्या था, key.pl, वो ऐड कर दिया. अभी ये कमांड चल जाएगी.
विंडोज से आप जब कनेक्ट कर रहे हो पावर शेल से, तो ये पूछेगा नहीं, ये वाले एरर्स नहीं आएंगे क्योंकि पहले से एडेड रहता परमिशंस वगैरह। इन केस ऑफ मैक और इन केस लिनक्स से जब आप कनेक्ट कर रहे हो, लिनक्स टू लिनक्स कनेक्ट कर रहे हो, उस केस में chmod कमांड आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी एक कनेक्शन हो गया, कैसे पता चलेगा? लेफ्ट साइड में आपको यूजर नेम एट वर्चुअल मशीन का नाम दिख जाएगा। अगर यहां से मैं एग्जिट मार देता हूं तो फिर से मैं लोकल मशीन पे आ गया, फिर से मैंने ये कमांड डाल दी SSH वाली, सेम पाथ से फिर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं, पहले इस मशीन को अपडेट करेंगे। तो ये जो आपका लिनक्स का मशीन रहता हमेशा फ्रेश है। ठीक है, यहाँ पे पैकेजेस वगैरह आपको अपडेट करने हैं। सो sudo apt अपडेट -y कमांड क्या है? sudo यानी सुपर यूजर से परमिशन लेना, apt ये पैकेज है, अपडेट ये आपकी कमांड है। -y में पहले से बोल रहा ताकि बाद में ये ना पूछे कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, फिर से यस डालना पड़े, इस वजह से -y डाल दिया। और सुपर यूजर ये डिफॉल्ट यूजर रहता मशीन का, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट रहता। परमिशंस अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं इस मशीन पे तो मुझे सुपर यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आपको आईफोन लेना है तो आप घर से परमिशन लोगे कि मुझे आईफोन लेना है। इन केस ऑफ जो फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए बोल रहा, जो वर्किंग है वो तो कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, sudo apt update -y ये कमांड अपडेशन के लिए, तो इसको ध्यान में रख लेना। तो अपडेट हो गया। अपग्रेड करना है तो sudo apt अपग्रेड कमांड देती, लेकिन ये प्रोडक्शन लेवल पे आपको फायर नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे समझो मुझे अभी पाइथन इंस्टॉल करना है तो sudo apt install python, sudo apt install python और -y मैंने डाल दिया। तो जो पैकेज अवेलेबल है वो भी क्रॉस चेक करना है आपको। कुछ केसेस में पाइथन 3 रहता। ठीक है, तो sudo apt install python 3 -y ये कमांड होगी इस मशीन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है। पाइथन 3 इज ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन ओवर हियर 3.12.3 पहले से प्रेजेंट है। तो जो मशीन्स आते हैं ना अभी, ये कुछ पैकेजेस वगैरह प्री इंस्टॉल रहते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे पाइथन प्रेजेंट है या नहीं? तो पाइथन 3 वर्जन कमांड आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा पाइथन 3.12.3। या आपको डायरेक्ट कमांड ट्राई करनी है, पाइथन स्पेस -हाइफन वर्जन रन होना चाहिए आपके केस में। तो ये जो टर्मिनल है ना आपको खुद हेल्प करता है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? हाउ यू आर द फॉलोइंग पैकेज रिप्लेस इट, यानी ये अगर मैं पैकेज डाल दूं तो मशीन को समझ में आ जाएगा पाइथन 3 ही पाइथन है। ठीक है, ये पैकेज अगर मुझे ट्राई करना है तो मैं ट्राई करूंगा sudo apt install python is python 3। इसने ये नया पैकेज इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे नंबर ऑफ पैकेजेस मिलियंस में प्रेजेंट है, बिलियंस में प्रेजेंट है लिनक्स के लिए। इसी वजह से लिनक्स ज्यादा फेमस है कि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते, पैकेजेस अपडेट कर सकते, अपग्रेड कर सकते, इंस्टॉल कर सकते, और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये खुद भी हेल्प कर देता। वो भी मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइथन इज पाइथन 3 कमांड डाल दिया। पाइथन -हाइफन वर्जन कमांड अभी चल जाएगी, यहाँ पे दिख रहा। थोड़ी देर पहले नहीं चल रही थी क्योंकि पैकेज नहीं था अवेलेबल। ठीक है, समझो आपको जावा इंस्टॉल करना है तो कमांड क्या बन जाएगी अभी? sudo apt apt install java। ठीक है, लेकिन अभी ये सेम पैकेज नेम नहीं है ना अवेलेबल, तो आपको सर्च करना है। समझो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये जावा सेम नाम पैकेज का यहाँ पे अवेलेबल नहीं, लेकिन आपको जावा तो इंस्टॉल करना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं sudo apt search java। क्या डाला मैंने? sudo apt search java, मतलब ये apt से सर्च कर लेगा जहां पे जावा का पैकेज अवेलेबल है। एंटर मार दो, तो इतने सारे पैकेजेस अवेलेबल है, यहाँ से कोई भी आप पैकेज सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। प्री-बिल्ट है, but हाँ, ये उसकी लाइब्रेरी रहती है एक्चुअल में, पूरी लाइब्रेरी है, और वहां से आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। हाँ राइट। तो अभी समझो मुझे
जावा इंस्टॉल करना है तो मैं sudo apt install ओपन जेडीके करके पैकेज रहता है इसका, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर थोड़ा अलग रहता स्नैप के साथ। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है मैं अभी ओपन जेडीके इंस्टॉलेशन के लिए ट्राई कर रहा, लेकिन क्या हुआ वहां पे ये बोल रहा कि एक एजेंट इंस्टॉल करो सेपरेटली। तो एजेंट क्या करेगा, इस पैकेज को कॉल करेगा, यानी मुझे स्नैप के साथ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, sudo apt install snap करूंगा और स्नैप यूज करके ओपन जेडीके इंस्टॉल करूंगा डिपेंडेंसी के साथ। हाँ, अभी क्या हुआ, मैंने पैकेज क्या डाला, sudo apt install open JDK, लेकिन ये ओपन जेडीके प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अभी टर्मिनल आपको खुद क्या बोल रहा कि ओपन जेडीके प्रेजेंट है, लेकिन किसके साथ है, स्नैप के साथ है। तो आप sudo snap install open JDK ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्नैप चाहिए ना अभी, तो हम लोग पहले स्नैप इंस्टॉल करेंगे। हाँ राइट। तो अभी कमांड क्या बन जाएगी, sudo snap install open JDK। हाँ अभी हो रहा है, मतलब आपको डिपेंडेंसी पैकेजेस के नाम ये सारी क्रॉस चेक करना या कमांड लाइन के साथ खेलना आना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, जितना आप टर्मिनल के साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे उतना बेटर होते जाएगा ये। ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा ये जावा इंस्टॉल हुआ है, तो अभी जावा -- वर्जन कमांड आपको ट्राई करना है। फिर भी क्या दिखा रहा, अभी जावा का वर्जन शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी रिक्वायरमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर पैकेज की है। जावा 17 रहता, जावा 21 रहता, या डिफॉल्ट जेआरई यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट है। तो इसमें से कोई भी पैकेज आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इस कमांड को, sudo apt install open jdk 17 हेडलेस, ये उसका वर्जन है, इसको डाल दिया। और अभी मैं इस इंस्टॉलेशन के बाद क्रॉस चेक करूंगा जावा -- वर्जन के लिए, तो मुझे वो दिखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी जावा -- वर्जन डाल दिया, तो अभी दिख रहा है। अभी यहाँ पे मैं हिस्ट्री कमांड दे रहा, कल हमने सीखा था हिस्ट्री कमांड, ठीक है। तो जितने भी कमांड्स है आप अभी ट्राई कर लो एक इंस्टेंस लॉन्च करके। sudo apt update, sudo apt install ट्राई करना, फिर पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए, फिर वर्जन चेक करने के लिए, फिर पाइथन इज पाइथन, फिर पाइथन -- वर्जन, फिर जावा इंस्टॉलेशन के लिए ट्राई करना, फिर सर्च करने के लिए ट्राई करना, फिर sudo apt install open jdk पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए, फिर sudo snap, और sudo snap के बाद जावा का वर्जन आपको दिख जाएगा। मैं कंटिन्यू करता आगे, थोड़ा वेट करना। अभी एक काम करते हैं, अभी मेरे पास पाइथन है, ठीक है। कल हमने क्या सीखा था, एक फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, टच कमांड से क्रिएट करते हैं, ओके। और फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे, mkdir कमांड से। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता पहले, mkdir, मैंने फोल्डर का नाम दिया प्रोजेक्ट। अभी एलएस किया मैंने, एलएस हमने कल सीखा था, फॉर लिस्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर। फोल्डर प्रेजेंट है, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं उसके अंदर। तो cd प्रोजेक्ट डाल दिया मैंने, मैं फोल्डर के अंदर गया, टैब मार दिया। हमेशा याद रखना जब भी आप टैब प्रेस करो तो ये ऑटो कंप्लीट कर देता, फाइल का स्ट्रक्चर भी ऑटो कंप्लीट कर देता या कमांड्स भी ऑटो कंप्लीट कर देता। तो अभी cd प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी प्रोजेक्ट फोल्डर में है। यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रहा, फाइल को नाम दे रहा मैं hello world .py। तो .py एक्सटेंशन आता पाइथन का, ओके। फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड, डाल दिया। इसके कंटेंट अगर क्रॉस चेक करने आपको तो कैट कमांड आप यूज कर सकते हैं। ये हेलो वर्ल्ड फिर से टैब के साथ डाल दो, कुछ भी कंटेंट नहीं है। और इसको एडिट करना है तो नैनो या विम भी यूज कर सकते हैं। तो नैनो स्पेस hello world .py डाल दिया मैंने। और अभी प्रोग्राम लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट डबल इन्वर्जन में मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, इसको कंप्लीट कर दिया। सेमीकोलन नहीं है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग नहीं है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, ओके। और अभी इसको रन करेंगे, कैसे रन करना है, पाइथन स्पेस फाइल का नाम hello world .py,
तो आउटपुट आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा। तो इस तरह आप कोई भी पैकेजेस को इंस्टॉल करके आपका प्रोजेक्ट का कोड यहाँ पे रखोगे, रन करोगे, दैट्स इट। अभी इसको मैं हिस्ट्री कमांड दे रहा, ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा मैं, ये सेम आपको ट्राई करना है। जब ये कमांड्स वगैरह आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो या रिवाइज कर लो तो ज्यादा इजी जाएगा आगे जाके, क्योंकि इसके साथ ही काम करना है हमें एज अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। बहुत सारे डिपेंडेंसी रहेगी। बेस जो रहता हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी का इन सी एस आई टी लिनक्स ही रहेगा। और कुछ एरर्स वगैरह आते हैं तो ट्रबल शूटिंग भी आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ये। तो ये पूरा कॉपी कर रहा मैं, ग्रुप पे पेस्ट कर रहा, अब वहां से रेफरेंस ले लो, चैट में भी डाल रहा। स्क्रीन शेयर करके ट्राई करना। अभी ये जो हमने ट्राई किया अजूर वीएम, वो डेबियन टाइप का था, डेबियन ओएस था। तो आपका जो उबुंटू ओएस रहता या अजूर वीएम का डिफॉल्ट ओएस जो रहता वो डेबियन टाइप ही रहता। यहाँ पे एपीटी पैकेजेस रहते हैं। और जो रेड हैट है वहां पे आरपीएम पैकेजेस रहते हैं, वहां पे यम रहता, वायू। तो sudo yum इंस्टॉल ऐसे रहेगा या sudo yum अपडेट, इस टाइप से कमांड्स रहेगी वायु एम। आरपीएम भी रहता है ना, रेड रेड हैट में रहता है। आरपीएम भी रहता, हाँ। रेड हैट, सेंटोस, फेडोरा, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। कैली लिनक्स भी उनका ही है। और बहुत सारे फेवर्ड ओएस भी अभी आते हैं कि आर्किटेक्चर अलग रहेगा और फिर बाद में आप उसको अलग पैकेजेस के साथ भी बिल्ड कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है कुछ जो डेवलपर्स वगैरह है वो खुद की ओएस भी बनाते हैं, क्योंकि लिनक्स का जो कोड है वो ओपन सोर्स है और गिटअप पे प्रेजेंट है वो कोड। लिनक्स टोरवाल्ड्स का अकाउंट है गिटअप पे, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एक सेपरेट टैब में आप सर्च कर सकते हैं लिनक्स टोरवाल्ड्स। हाँ, वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी जोन आपने सिलेक्ट किया ना, हाँ, जोन 1 कर देता हूँ। 3 को हटा दीजिए, उसकी कैपेसिटी कम है।
सर हमको इसमें सिर्फ we needed just SSH, right? हाँ चलिए, नहीं हाँ, ठीक है आप I think this will be all good. डायरेक्ट क्रिएट कर दूं ना यहाँ से तो आई थिंक मॉनिटरिंग एंड एवरीथिंग विल बी गुड. हाँ क्रिएट कर दीजिए. One sec. Go to resource. I'm just copying the SSH. I think it was SSH if one right. वहाँ पे क्लिक कीजिए आप गो टू रिसोर्स पे. नहीं, मैं टर्मिनल में पहुंच गया हूँ एक्चुअली. वन सेकेंड. अच्छा वो स्क्रीन ओके आपको ओके. okay. Then click on connect option. यस. Connect. Then यहाँ पे दो ऑप्शंस है. एक SSH यूजिंग Azure CLI, ठीक है, जो ऊपर जो दिख रहा है ना आपको को पायलट के राइट साइड में, हाँ ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. और नेटिव ऐसे जो मैंने करके दिखाया ना वो था नेटिव वाला, नेटिव ना. तो आप नेटिव ले सकते हैं अभी. और लास्ट में आपको कमांड दिख रही है SSH-i SSH.id करके, आप वो कॉपी कर लीजिए आप नीचे नीचे. अभी उसको नोटपैड में अपडेट कर लेना आप ईमेल के हिसाब से. ठीक है. टर्मिनल में पेस्ट कर देता हूँ. यू आर एबल टू सी माय टर्मिनल राइट? No, I No? think you have to share entire screen. वन सेक.
No, not. I think try for share screen and third tab रहेगा वहाँ पे right side में entire screen. एंटायर स्क्रीन ही किया था मैंने। एक मिनट ना। हाँ, इसको मिनिमाइज कर दीजिए एक बार। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके। वहाँ पे ये जो है ना SSH-i देन कीपेयर का नाम डालना है आपको, जो आपका कीपेयर का था, जो डाउनलोड हुआ ना, ऊपर ही रहेगा। हाँ, उसका नाम था और आपको ब्राउजर में दिख जाएगा डाउनलोड्स में। हाँ, ऊपर राइट साइड डाउनलोड्स, ऊपर ऊपर क्लिक मार दीजिए। हाँ, linux.me.py। सेव नाम डाल दो है। यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट आ जाएगा। हाँ, SSH-i स्पेस लिनक्स अंडरस्कोर की .pl अभी नयन एट अभी आप मैग्नेट है ना, ठीक है। CH ठीक है, ये पहले पेस्ट कर दो। ओके, हाँ पहले CH मोड डालना, CH मोड 400। अच्छा परमिशन राइट। हाँ, कीपेयर का नाम लिनक्स अंडरस्कोर की, टैब मार देना बीच में। हाँ, हाँ हो गया। अभी हो जाएगा। या ओके, हाँ, अभी क्लियर कमांड देना पहले। एंड डिस्कस कर लेते हैं एक बार। We searched a few Java packages. यस, इसमें से कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल के लिए ट्राई कर सकते हो। ये जावा प्रॉब्लम, एक काम करो, sudo apt इंस्टॉल स्नैप करना पहले, फिर sudo snap इंस्टॉल जावा करना। sudo apt इंस्टॉल स्नैप, स्नैप नहीं है ना, sudo apt install snap is not available but refer to another package इसमें। पहले अपडेट दे दो, sudo apt अपडेट दे दो, -1। Oh, अभी ट्राई करना। okay, now it's happening. Yeah, I'm used to with RPM and Yum, so this is also In fine. that case, you can also try for launching Red Hat virtual machine. RHEL, right? Yeah. Ah. No, that's fine. I wanted to try this. Now, Now try for installing Java. Java. Open JDK, sudo I snap, think sudo snap install Java. Sudo snap. Open JDK में work, I guess. वो OpenJDK JR something होगा वो। Sudo apt install, I think sudo apt install open JDK may work.
sudo you can also type a sudo apt search jdk. That will also work. That will list sudo apt search jdk. Can take any package from here. Open jdk -8. Open jdk -8 jdk -headless. Copy that one. The one which I highlighted. Anything is fine, right? I mean, it's just for the. Shall I? I mean, I'll just do for this one. But that's not a package. But ये तो plugin है, right? हाँ, उसके ऊपर रहेगा वो पैकेज में। नहीं, उसके ऊपर Run time. ऊपर वाली लाइन नहीं, जो आप कॉपी कर रहे हैं ना उसके ऊपर वाली Okay. लाइन। हाँ, right. ये वाला. Okay. जो ग्रीन में है ना, ग्रीन कलर में वही। हाँ. हाँ, वो कॉपी कर सकते हैं आप, वो चल जाएगा। Okay. हाँ, ओके। Yeah. हाँ, यस। अभी जावा स्पेस -, वर्जन। नेक्स्ट नहीं कर रहा। आई थिंक दूसरा पैकेज को भी ट्राई करो। जावा वर्जन से आ जाता है शायद ना. Yeah. ओके, जैसे आप रन करने के लिए मैं ट्राई कर सकती कोई भी जावा प्रोग्राम, कोई सिंटैक्स क्रिएट करके ट्राई कीजिए। टच स्पेस हेलो वर्ल्ड डॉट जावा डालना। हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। नहीं, फाइल का नाम चाहिए हमें। हाँ, अभी सुडो नैनो फाइल का नाम। हाँ, बीआई चलेगा बीआई भी। ठीक है, मैं उसे कर लेता हूँ. ओके, अभी इंटरनेट से कुछ भी कॉपी कर दो, हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम। एक मिनट. सुडो स्टैटिक वॉइड मेन करके रहेगा। गो लैंग्वेज के लिए भी ट्राई करना कुछ लोग, गो लैंग्वेज भी रन करके ट्राई करना इंस्टॉलेशन के लिए। sudo apt install go कमांड सर्च है, उसके main डॉट गो करके फाइल आप रन कर सकते हैं। पाइथन के केस में .py, जावा के केस में जावा, लेकिन जावा रन करते वक्त जावा सी स्पेस फाइल का नाम डालना पड़ता है आपको रन करने में। तो आउटपुट के लिए ./ करके फाइल का नाम, मतलब 2 बार कमांड आपको डालनी पड़ेगी रन करने के लिए इन केस ऑफ जावा। वैसे प्रेफर करेंगे अमेज़न लिनक्स जो रिडंडेंट पैकेजेस को सपोर्ट करता। यहाँ पे क्या रहता कि अजूर के केस में ये उबुंटू के वीएम्स देते, लेकिन ट्राई करेंगे रेड हैट की वीएमसी लॉन्च करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि वो
ज्यादा चलता। स्टेबल ओएस की रिक्वायरमेंट रहती है ना। और अब अभी आज से विंडोज छोड़ना होगा आपको। विंडोज ओएस ज्यादा नहीं यूज करेंगे अभी। अतुल, सो इंडस्ट्री वाइज विंडोज चलता ही नहीं है क्या क्लाउड पे? नहीं, क्या रहता कि ये जो सर्वर्स है डेटा सेंटर्स के, उसकी बेस ओएस ही लिनक्स है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें पैकेजेस ज्यादा है और ये ओपन सोर्स टूल्स बोलते हैं जितने भी हम लोग हाँ। यूज करते हैं ना, जैसे गीट वगैरह है, गीट, डॉकर, क्यूबरनेटिस रहेगा या बाकी भी पैकेजेस है। अच्छा। तो ये सपोर्टेड बाय कम्युनिटी रहता। लोग कंट्रीब्यूट करते कोड को राइट। और आगे चलता जाता है, ये पैकेजेस वगैरह रिलीज भी करते हैं। तो इस वजह से जो सर्वर की ओएस है वो प्रेफर करते हैं वो लिनक्स है। तो 90 to 95% सर्वर्स जो अभी इतने सालों से चल रहे डेटा सेंटर में, उसकी कोर ओएस ही लिनक्स है। या आप गूगल भी कर दोगे हाँ हाँ। साइंटिफिक ओएस, साइंटिफिक ओएस आपको वही दिखाएगा। मतलब नासा की जो ओएस है वो भी लिनक्स ही है। अच्छा। और जो मैंने कल आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, डिस्कोस वॉच, वहां पे उसका रैंकिंग वगैरह रहता। और आप खुद की भी लिनक्स बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें टाइप्स है, मतलब कुछ लोग गेमिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए सेपरेट ओएस है। कुछ लोगों को ये मैक वाले इंटरफेस अच्छा लगता, तो वैसे पपेट करके भी एक ओएस आती है जो यूजर इंटरफेस उसका मैक जैसा है। एक ओएस है जो उसका यूजर इंटरफेस विंडोज जैसा है, लेकिन बैकग्राउंड में लिनक्स ही है। तो बहुत सारे फेवर्ड ओएस भी है अभी कि कुछ मशीन का कॉन्फ़िगरेशन कम रहता है, 1 GB रैम, 2 GB रैम है, तो उसके लिए लाइट वेट के लिए भी ये सपोर्ट करते हैं। वो मेन है। ओके। तो एक्चुअली हम लोग तो अभी विंडोज से फैमिलियर है, तो हमारे लिए डायरेक्टली शिफ्ट होना लिनक्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। Difficult, हाँ। इसमें ज्यादा से ज्यादा काम कमांड लाइन से ही रहता, क्योंकि एक्चुअली मिलिट्री ओएस थी यूनिक्स करके। फिर यूनिक्स में पैकेजेस डाल के लिनक्स टोरवाल्ड ने क्या किया, उसको जनरल पब्लिक लाइसेंसेस के अंडर लाया, जीपीएल बोलते। और बाद में क्या हुआ, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह है या जिनको आईटी में आना था, मतलब स्टार्टिंग की बात है, तो उन्होंने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया और फिर उसको एज अ प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। लेकिन ओपन सोर्स का कोई भी यूज कर पाएगा ऐसे। ओके, तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे लिनक्स ओएस के साथ ही करेंगे या फिर विंडोज के साथ भी करेंगे? मोस्ट ऑफ द केसेस लिनक्स पे ही रहेगा प्रैक्टिस पूरा आगे जाके। जैसे आप ये क्यूबरनेटिस का क्लस्टर बनाते हो, बिग डेटा का क्लस्टर बनाते हो, उसमें भी जो नोड्स वगैरह रहते हैं ना, वो लिनक्स नोड्स ही रहते हैं। मतलब प्रोडक्शन हम लोगों के लिए रिकमेंडेड लिनक्स ही है। ओके, हम लोगों के पास लोकल ओएस विंडोज का है लैपटॉप में, नहीं, उसका हम कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि क्लाउड में हम लोग सारे रिसोर्स रिमोटली क्रिएट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। थ्रू पावर टेल में हाँ, हम कनेक्ट करेंगे पावर शेल थ्रू, या पट्टी टूल भी आता है, उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अपकमिंग सेशंस में पट्टी भी कवर कर लूंगा कैसे करना। ठीक। वैसे मैं नेक्स्ट वीकेंड से ऑफलाइन ही आ रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। आज जो प्रैक्टिस करने वाले थे हम लोग, दैट इज फॉर होस्टिंग अ वेबसाइट। So these are the commands that we will try, लेकिन ये पैकेजेस भी क्रॉस चेक करना बाकी है। So the package that we will try for web server, this is Apache 2, sudo apt update -y, ये अपडेशन के लिए। Apache 2 अगर इंस्टॉल करना है तो sudo apt install Apache 2, ये कमांड चल जाएगी। तो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ, sudo apt install Apache 2। तो अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर देगा। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, यहाँ पे वेब सर्वर रनिंग में चाहिए,
वेब सर्वर का पैकेज रनिंग में रखना पड़ता, तो उसके लिए sudo system ctl कमांड रहती, सिस्टम सीटीएल कमांड्स रहते, जो सिस्टम कंट्रोल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपाचे का सर्वर ऑन करना है हमें, यानी हमारी कमांड बन जाती sudo system ctl start apache 2। I'm just copying this, sudo system ctl start apache 2। बाद में इसको इनेबल करना है। अभी ये इनेबल क्यों करते हैं? क्योंकि बूटिंग लेवल पे, जैसे आपने कोई वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया, उसमें पैकेज तो रख दिया, सर्विस भी रनिंग में है, लेकिन बाद में वो स्टॉप होता है, रिस्टार्ट होता है, तो हमें रिक्वायरमेंट है वो अपने आप चल जाए, अपने आप वो अपाचे का सर्वर रनिंग में आ जाए। तो इस वजह से इनेबल कमांड देते हैं हम लोग। तो sudo system ctl enable apache 2 ये कमांड अभी फायर करेंगे। तो जब ये आपने सर्वर स्टार्ट कर दिया, आप पब्लिक आईपी फिर क्रॉस चेक कर सकते हैं इंस्टेंस लेवल का। तो यहाँ पर मैं वर्चुअल मशीन का पब्लिक आईपी ब्राउजर में पेस्ट करके क्रॉस चेक कर रहा हूँ। वर्चुअल मशीन में गया मैं और लिनक्स में इस लिनक्स वीएम का पब्लिक आईपी ओपन कर दिया मैंने ब्राउजर में। अरे यार, http:// public IP एंटर। यहाँ पे अपाचे 2 का डिफॉल्ट पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक डायरेक्टरी में रहता है, हमेशा डायरेक्टरी का पाथ आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। वो जो डायरेक्टरी पाथ रहता है दैट इज /var/www, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला। और यहाँ पे आप पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्टरी में फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस फोल्डर में जाना है हमें, ये वाले /var/www/html। तो कैसे जाएंगे? अभी cd कमांड से जाएंगे, आसान है। सो cd /var/www/html। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पार्ट डाल दिया, तो क्या दिख रहा है आपको? var/www/html। और यहाँ पे ls कर रहा, तो index.html पेज है। यहाँ पे आप खुद का वेबसाइट का पेज रख दो, वो पब्लिक आईपी पे दिख जाएगा, ठीक है। एक बेसिक टेम्पलेट ट्राई करते हैं। मैं पहले rm कमांड यूज करता, rm index.html रिमूव के लिए। ये फाइल को मैं रिमूव कर रहा, sudo यूज करना पड़ेगा मुझे, sudo rm index.html टैब मार दिया मैंने, चली गई फाइल। अभी ls कर दिया तो कुछ फाइल्स नहीं है। और यहाँ पे भी वेब ब्राउजर पे अगर क्रॉस चेक कर रहा मैं, खाली इंडेक्स दिख रहा। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं टच कमांड से, टच index.html, और इसको एडिट मार देता मैं। sudo के साथ ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी में आता। तो sudo touch index.html, फिर sudo nano index.html, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडर 1 वेबसाइट। खाली टेस्ट कर लेते हैं। और /header1 जो थोड़ी देर पहले हमने index.html पेश किया था वही डाल दिया मैंने। और फिर ये पब्लिक आईपी को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है? अभी ये सारे कमांड्स ट्राई करने हैं, इस डायरेक्टरी में जाना है और फिर चेक करना है। तो मैं हिस्ट्री कमांड दे रहा, ये रहेगा आपका वेब सर्वर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑन लिनक्स। sudo apt install apache 2-y sudo systemctl start apache 2 sudo systemctl enable apache 2, then you are navigating to default directory where www/html। ये apache 2 के केस में वही डायरेक्टरी रहती है। ये pwd ls कमांड ये हमने कल देखा था, और वहां पे जो एग्जिस्टिंग पेज था मैंने रिमूव किया rm कमांड से। और रिमूव करने के लिए एरर आए, क्यों आए? क्योंकि ये आपकी रूट डायरेक्टरी है, इस वजह से परमिशन देना जरूरी है, ठीक है। और फिर टच कमांड से मैंने index.html बना दिया और वहां पे कंटेंट रख के पब्लिक आईपी क्रॉस चेक कर लिया। दैट्स इट। This is how you host the web server into Linux. हाँ, राइट। Some control we install Apache 2 and first one we saw that was with respect to Windows. Windows. IIS. हाँ। अभी आगे जाके ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी स्क्रिप्ट बना दी और वर्चुअल मशीन लॉन्च करते वक्त ही
डाल दिया तो ये क्या करेगा, वेब पेज के साथ ही डायरेक्टली बना देगा। वैसे भी कर सकते हैं, या समझो आपका जो कोड है, आपका वेबसाइट का कोड समझो गिट के ऊपर है, तो गिट क्लोन कमांड भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। तो गिट क्लोन यूआरएल आपका रेपो जो रहेगा, फिर से सीडी स्पेस फोल्डर का नाम, तो वो पाथ भी सेट कर सकता है, वेबसाइट डायरेक्टली होस्ट भी कर सकता है। कुछ केसेस में समझो आप डेवऑप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी रिक्वायरमेंट ऐसी भी रहती कि डेवलपर ने कोड किया है, आपको खाली वो वर्चुअल मशीन में होस्ट करके चाहिए, कैसे करेंगे वगैरह क्वेश्चंस पूछ सकते हो उस केस में। अभी क्या चल रहा है, जब आप इंटरव्यूज देने जाते हो, अभी वो पूरा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ ही चाहिए उनको, डेवऑप्स भी स्किल सेट चाहिए और अज्यूर भी चाहिए, अज्यूर एडमिन भी। एक मेरे कैंडिडेट थे, मेरे स्टूडेंट थे, तो उन्होंने डेवऑप्स के लिए अप्लाई किया था अभी 2 वीक्स की पहले की बात है। तो उन्होंने डायरेक्टली असाइनमेंट दिया आगे वाली कंपनी ने, वहां पे CI/CD पाइपलाइन सेट करके जो आपका कोड था फ्रंट एंड और बैक एंड, उसको कंटेनराइज करना था, इमेज पुश करनी थी डॉकर हब को, वहां पे वो क्लस्टर भी क्रिएट करना था क्यूबरनेटिस का, उसके अंदर वो कोड चलना चाहिए। ये पूरा प्रोसीजर था। प्रैक्टिस करते वक्त जब उन्होंने ट्राई किया तो उसके लिए 4-5 घंटे चले गए। मतलब इतना इजी टास्क नहीं है जितना दिखता है उतना, कि डिपेंडेंसी पूरी सेट होनी चाहिए। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। मतलब आप जब क्लाउड स्किल सेट दिखाते हो ना, तो उनका रहता कि आपको आईटी बैकग्राउंड तो चाहिए, वो एक थोड़ा रहता, और आपको लिनक्स आता है, मतलब आप कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ोगे। तो क्लाउड में मेन रिक्वायरमेंट लिनक्स ही है। समझो आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे, क्लाउड के इंटरव्यूज के लिए, और उन्होंने पूछ लिया आपको लिनक्स आता है क्या, वो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमेशा। तो हमें कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता कि ये हमारे ब्लड में ये लिनक्स वगैरह। ठीक, got it. तुम्ही या कमांड नोटपॅड मध्ये तुमच्या पर्सनल इथं आहे का? तुम्ही हा. आपल्या chat मध्ये टाकणार आहे का? टाकता का? हा, मी ग्रुपला तसं पेस्ट केलंय सर. मोस्ट ऑफ द मोबाईल मध्ये हा. असल्यामुळे डिफिकल्ट पडेल ते. अच्छा, हा weakness, 2-4 दिवस नाही तरी मी काय करतो, एक फोल्डर बनवून ठेवतो शेअरिंग साठी. हा. याचं रेडीमेड मटेरियल पण येतं, पण ते त्यामध्ये काय तुम्ही किती ते रेफर करणार त्याला लिमिट नाही. लिनक्सचं सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणून एक बुक असतं, रेड हॅटचंच आहे. एक्झाम्स असतात त्याच्या सेपरेटली, 3 एक्झाम्स असतात. तर सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेशन 1, 2, 3 मध्ये अँसिबल वगैरे टूल असतं जे कॉन्फिगरेशन मॅनेजमेंटला यूज करतात. आणि 1 मध्ये तसं बेसिक आहे सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेशन 1 मध्ये, आणि 2 मध्ये थोडं ऍडव्हान्स आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्ही सर्व्हिसेस कॉन्फिगर करू शकता, किंवा लॉग इन, किंवा ते बॅकअपचं, रिकव्हरीचं बाकीचे डिटेल्स आहेत. तर त्याचे पीडीएफ वगैरे भेटतात. वाटल्यास मी त्या पीडीएफ जर माझ्याकडे असतील अवेलेबल तर मी ते थोडं चेक करतो आणि ड्राईव्ह मध्ये अपलोड करून देतो. चीट शीट पण भेटतात. रेड हॅटच्या ऑफिशियल वेबसाईटला तुम्हाला चीट शीट पण भेटतील, त्या पण डाउनलोड करू शकाल तुम्ही. त्याच्यामध्ये 3 चीट शीट आहेत, एक बेसिक आहे, इंटरमिजिएट आहे, ऍडव्हान्स आहे, एक सिस्टीमची एक आहे. एक सेकंड, तुम्हाला त्या रेफर केल्या तरी चालते. त्याची लिंक मी देऊन ठेवतो इथे तुम्हाला. ऍडव्हान्स वाली एक आहे, म्हणजे सगळेच आहेत बऱ्यापैकी, सगळे चिटशीट आहेत. त्या लिंकला जावा तुम्ही आणि पीडीएफ डाउनलोड करून ठेवले तरी चालतील. आता जे आपण प्रॅक्टिस केलं काल आणि आज, ते आहेत त्याच्यामध्ये. So, Atul, I got the Apache running, Hmm. and then I just need to change this file, right? हा, राईट. Okay. You can also try for sudo systemctl status. Yeah, I did that already. Here it is. It's like Kafka almost. हा, right. So yeah, here status you wanted to see. So it's enabled, active running. You see my screen? No. हा, yes. Okay.
ठीक है, वो तो मैंने डिलीट कर दिया अभी वेबसाइट वाला, तो ठीक। बट आई नो। ठीक है, तो जितना भी प्रैक्टिस किया है एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ऑल रिसोर्सेज से डिलीट मार सकते और स्टॉप कर दे यहाँ पे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। एक सेकेंड, अटेंडेंस का क्यूआर मुझे आपको स्कैन करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयर में। You can copy that last command. This one? Oh, okay, that one, and you can modify it. Is that terminal? You need to search it. Terminal. Here? नहीं नहीं नहीं, आपके मशीन में है ना टर्मिनल, आपको सर्च करना पड़ेगा एप्लीकेशंस में। इनको PowerShell, I think she has to go in PowerShell. नहीं नहीं, वो क्लाउड शेल है, इसको मिनिमाइज करना। Okay. हाँ, एक बार टैब में सर्च मारना पावर शेल है क्या। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्लाउड शेल से भी ट्राई कर सकते हैं। जो अरे यार नहीं है, ठीक है। AWS सॉरी Azure के अकाउंट में आ जाइए आप। Okay. हाँ, वहाँ पे को पायलट लिखा है ना, हाँ राइट साइड में, वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड, राइट उसके राइट में, हाँ क्लिक कर दीजिए। हाँ, यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं आप।